Well, in fact, as part of the grand celebrations across the country on the Amrit Mahotsav, these are the latest images now coming in from Lucknow. Through the day, we have seen from multiple cities how people have gathered together to celebrate country's 75th independence as part of the Amrit Mahotsav. We'll try and go across to my colleague Vivek, who's there at the spot, getting us more details. दर्द है वो लोग जिस तरीके से जो विभाजन विभीषिका का जो दर्द जो देशवासियों ने झेला था वो कहीं ना कहीं दर्शाने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी ने 1 साल पहले ही इस बात को कहा था कि 14 अगस्त का जो दर्द है वो सभी देशवासियों को पता होना चाहिए, सभी युवाओं को वो दर्द भी जानना चाहिए कि कैसे जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के पहले उसके जो एक तरीके 2 टुकड़े हुए उस देश के, और उस वक्त क्या समस्याएं हमने झेली, उस समस्याओं के बारे में लोगों को जानना चाहिए। क्या जनता ने जो समस्याएं झेली, जो लोगों का जो महिलाएं थी उन्होंने क्या समस्याएं झेली, पलायन के समय जो भूखमरी की समस्या हुई उससे कितनी लोगों को समस्याएं हुई, इसके साथ साथ बीमारियां जो फैली उससे कितनी समस्याएं हुई, ये तमाम जो चीज़ें हैं, और इसके साथ साथ जो अमानवीय अत्याचार हुआ लोगों के साथ, वो तमाम चीज़ें लोगों ने अपने जो अब उनके हाथों में जो तख्तियां हैं, जो पट्टियां हैं, उन चीज़ों पर इन तमाम चीज़ों का उल्लेख है। और प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। हालांकि पूरे देश में इसी तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं विभाजन विभीषिका को लेकर के। हालांकि अब जो सामने की तरफ में ये जो यात्रा निकली थी पिछले थोड़ी देर पहले, वो यात्रा अब यहाँ से एक तरीके से खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी यहाँ से तकरीबन कुल 150-200 मीटर की ये यात्रा थी जो अब मुख्यमंत्री यहाँ पर जो पटेल प्रतिमा है, मुख्यमंत्री वहाँ पर पहुँच करके इस यात्रा को खत्म करेंगे। हालांकि वहाँ पर पहुँचने के बाद मुख्यमंत्री जो विभाजन विभीषिका को लेकर के एक जो वहाँ पर इसको लेकर के एक प्रदर्शनी लगाई गई है, उस प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे और उसके बाद अवलोकन भी करेंगे। उसके बाद आम जनता के लिए भी वो प्रदर्शनी खोली जाएगी, जिससे युवा अपने आप को उस समय की यातनाओं से जोड़ सके, अपने वो दर्द जो है वो कहीं ना कहीं महसूस कर सके कि उस समय के नौयुवाओं को या उस समय के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उस समय के जो लोग थे, उन्होंने क्या दर्द झेला। और कुल मिलाकर के ये आज विभाजन विभीषिका का जो कार्यक्रम है वो फिलहाल आज यहाँ पर हुआ है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश के अलग अलग जगहों पर हुआ है। हालांकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम को लीड किया। और मुख्यमंत्री के साथ साथ बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य जी की बात की जाए, चाहे वो स्वतंत्र सिंह जी की बात की जाए, चाहे केशव प्रसाद मौर्य की बात की जाए, वो दोनों लोग साथ में मौजूद रहे। साथ साथ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह वो भी मौजूद थे। और 3 अलग अलग पंक्तियां बना करके एक तकरीबन 100 मीटर से बड़ा एक जुलूस निकाला गया। हज़ारों की संख्या में लोगों ने उस जुलूस में हिस्सा लिया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि लोगों के हाथों में तिरंगा था, लेकिन लेकिन वो पूरी तरीके से मौन थे, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। सब पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से सबने ये जो एक जुलूस है वो निकाला है। और वो दर्द जो 14 अगस्त को पूरे देश ने जो झेला था उसको कहीं ना कहीं इसके माध्यम से बताने की कोशिश की गई है। अब जो प्रदर्शनी लगी है उसमें भी युवा पहुंच करके उस प्रदर्शनी के माध्यम से जो तमाम लोगों की समस्याएं थी वो लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री इस वक्त उस प्रदर्शनी में पहुँच चुके हैं। उस प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री अवलोकन कर रहे हैं। इसके पहले उन्होंने उद्घाटन किया उस प्रदर्शनी का। अब मुख्यमंत्री तमाम जो पटेल प्रतिमा के आस जो पार्क है वहां पर पहुंच करके मुख्यमंत्री उन चीज़ों का अवलोकन कर रहे हैं। और जो तकलीफ चाहे युवाओं ने झेली हो, महिलाओं ने झेली हो, जो अत्याचार झेला, जो एक तरीके से बात की जाए जो तमाम महिलाओं के साथ बहुत कुछ बदला, दंगे भड़के, कत्लेआम हुआ, जो लोग बच गए उनमें लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। और ऐसा वो दिन था, ऐसे दिन को किस तरह से याद किया जाए, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ स्वतंत्रता दिवस मनाते थे, लेकिन उसके एक दिन पहले उस आज़ादी के संघर्ष के लिए हमने कितने लोगों की कुर्बानी दी, कितने लोगों को हमने छोड़ा, कितने लोग हमारे शहीद हो गए। उन लोगों की याद में आज का ये दिन बेहद महत्वपूर्ण है। और यही कारण है कि विभाजन विभीषिका दिवस के तौर पर आज के इस दिन को भारतीय जनता पार्टी मना रही है। और पूरे देशवासियों से भी इस दिन को मनाने की अपील बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अपील की थी पिछले वर्ष
इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी कि 14 अगस्त का दिन हमें विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाना चाहिए और यही कारण है कि आज का दिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। पाकिस्तान जहां आज के दिन को स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाता है तो वहीं भारत में अब आज का दिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाया जाने लगा है। 22 साल की ब्रिटिश गुलामी के बाद भारत आज़ाद हुआ, लेकिन भारत जब आज़ाद हुआ तो 2 टुकड़ों में बंट गया और जब भारत 2 टुकड़ों में बटा तो कितना संघर्ष रहा, कितने रिश्तेदार एक दूसरे से छूटे। सिर्फ मुल्क नहीं बदला, सिर्फ किस्मत नहीं बदली, बल्कि सब कुछ बदलता हुआ नजर आया। 2 टुकड़ों में जब देश विभाजित हुआ तो भारत और पाकिस्तान के अलग अलग कहानियां दर्दनाक रही। कई घर छूट गए, कई लोग टूट गए, कई अपने भीड़ में गुम हो गए, तो कई उस त्रासदी को जिंदगी भर न भूलते नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि उस त्रासदी को भी याद रखना चाहिए जिस त्रासदी ने हमें 2 अलग अलग मुल्कों में बांट दिया। और यही कारण है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर, उस स्मृति के तौर पर हम आज के दिन को मना रहे हैं, याद कर रहे हैं। हम उन लोगों को याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं जो लोग इस आज़ादी के संघर्ष में हमें छोड़कर चले गए। कुछ लोग दूसरे मुल्क में हैं तो कुछ इस मुल्क में हैं और यही कारण है कि इस दिन के अवसर पर विभाजन विभीषिका को हम याद कर रहे हैं। किस तरह से वो दिन था, किस तरह से ट्रेनों में लोगों को ठूसा जा रहा था, कत्लेआम हुआ, उन तमाम पलों को कहीं ना कहीं आज अपनी स्मृति पटल पर लाया जा रहा है और याद किया जा रहा है। ये समझा जा रहा है, ये सोचा जा रहा है। और देखिए, मौन जुलूस किए है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, न भारत माता की जयकारे लग रहे हैं, न यहाँ पर किसी तरह के नारे लग रहे हैं। सिर्फ मौन धारण यहाँ पर किया गया है और इस मौन के साथ यहाँ पर ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले इस विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और ये रैली जो है ये यहाँ से रवाना हो रही है और सीधे ये रैली कनाट प्लेस के जो इनर एरिया है वहाँ पर पहुँचेगी और वहाँ पर एक बार फिर उन शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। एक बार फिर तस्वीरों को देखिए और याद करिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिवस को मनाने की अपील की थी और वही आज हमें देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आज का ये दिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मना रही है। पाकिस्तान के एक अलग देश के रूप में उभरने की दास्तां दिल दहलाने वाली है और यही कारण है कि हमारी स्मृतियों में हमारे आने वाली पीढ़ी को ये याद रखे, ये इल्म रखे कि किस संघर्ष के साथ देश को आज़ादी मिली। यही कारण है कि आज हम जहां पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है तो हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर आज के दिन को मना रहे हैं। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत पिछले वर्ष से हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अपील की थी और आज एक बार फिर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। श्रद्धांजलि उन लोगों को दी जा रही है, याद उन लोगों को किया जा रहा है जिनके संघर्ष से, जिनके परिश्रम और त्याग से आज हम उन्मुक्त हवा में सांस ले पा रहे हैं। यही कारण है कि जब इस देश का विभाजन हुआ, जब इस मुल्क का बंटवारा हुआ तो कई लोगों ने अपने को तो छोड़ा है, अपनों को कहीं ना कहीं उन्होंने खोया है। धैर्य का परिचय लोगों ने दिया, लेकिन कई लोग अपनों को खोते भी नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन के दौरान लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में पिछले साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि अब से हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील और घोषणा के बाद आज भारतीय जनता पार्टी इस दिन को मनाती हुई नजर आ रही है। कल हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, लेकिन उस Viewers are getting some breaking news at this point of time. A controversial comment being made by Bhupesh Baghel. Bhupesh Baghel has made a controversial comment comparing Savarkar to Jinnah. He says Savarkar had proposed the two-nation theory. Jinnah supported that proposal. They tried their best not to leave the British country. That is the quote from Bhupesh Baghel. A very, very controversial coming in, where Baghel is equating Savarkar with Jinnah.
A very shocking statement coming there where he says, and I repeat the quote, Savarkar had proposed the two-nation theory. Jinnah supported that proposal. They tried their best not to leave the British country. Extremely provocative statement coming. We'll, of course, be showing you that sound bite as well, the sound bite of Bhupesh Baghel, which has come in. Let us listen in to that provocative statement being made by Bhupesh Baghel. ये तो अंग्रेज जाए ही मत, और अभी भी अंग्रेजों की आलोचना नहीं करते, ये गांधी की आलोचना करते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ एक शब्द भी बयान दिया तो बताइए। उन्होंने अध्यक्षता किया, उस समय उन्होंने कहा कि 2 राष्ट्र का उन्होंने स्वीकार किया, और वहीं मोहम्मद जिन्ना ने 1937 में उसको स्वीकार किया। तो 2 राष्ट्र के जो सिद्धांत है उसको सावरकर ने प्रस्तावित किया, और उसका समर्थन जिन्ना ने किया। तो विभाजनकारी तो ये लोग हैं। देश की आजादी में उनकी भूमिका क्या रही? 1925 में बन गया था ये आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद। इनके तमाम नेताओं को समय बयान देखिए। 1942 में वो कहते हैं कि इसमें शामिल नहीं होना है, कैसे दबाया जाए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी वायसराय की चिट्ठी लिखते हैं कि ये तो अंग्रेज जाए ही मत, और अभी भी अंग्रेजों की आलोचना नहीं करते, ये गांधी की आलोचना करते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ एक शब्द भी बयान दिया तो बताइए। All right, I'm being joined by Sardar R.P. Singh, BJP spokesperson, on the phone line. Thank you for joining us. This is a very shocking statement there coming in from Bhupesh Baghel. What is the first reaction, Mr. Singh? Well, this is frustration of people realizing the relevance of 14th August. Last 2 years, people have started celebrating or marking the occasion of the pre-independence or the partition of the country. And they have no answers on that. Congress has no answer for that. That how did 10 lakh people were killed because of you wanted to draw out a line and then without getting the proper logic and drawing out the line. How did that only Punjab was divided? So there are no answers to that. How many were killed? How many Punjabis were killed? Or because of partition? Because of partition which was not properly planned by then Congress party. So they have no answer to that. They keep building up their new history which has no ground, which has no evidences. And they so keep building up their new history and they keep cooking up some new history. Also, and this is happening as India approaches its 75th Independence Day. And just a short while back, Congress had questioned the intent of PM Modi behind observing Partition Horrors Remembrance Day. Where do you think things are leading to politically on such an important day for India? Well, people who used to claim legacy of Nehru, then they should claim the complete legacy of Nehru. Why the half legacy of Nehru, which is for the independence, but what for the partition? So this history which has been revealed to people now, the younger generation of the country should know what India suffered. Give me a second. My very dear Rashid Alvi is also joining us. Hold on, RP Singh. Hold on. I just want Rashid Alvi also to come in and respond. What is the explanation of the Congress? It's a very, very shocking statement coming from Bhupesh Baghel. Mr. Alvi. No, it is a part of the history. What Savarkar said that time, it was he who gave two-nation theory. And later on, Jinnah had adopted this. There is no doubt in it. So definitely it is a part of the part of the history. And one thing more, after almost 70 years of independence, whether it is a relevant question to find out. No, it is the fact there are two nations. And Pradhan Mantri has already said if he wants, within a period of 11 days, he can conquer. So, all of us are with Prime Minister and he should attack Pakistan and Pakistan should be part of this country. Even the chief of RSS has given this statement. Akhand Bharat means
Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, and even Bangladesh. So we are, if they want, they should go ahead. Why we should talk about Savarkar and Jinnah? It is immaterial. It is not relevant today at all. Hello? Right. But still, a member from your party spoke about it. That is what the big question is, Mr. Alvi. No, it is all right. What he said, it is a part of history. Two-nation theory was given, first of all, by Savarkarji. And later on, Jinnah had adopted it. Jinnah had left this country. He had gone to London. He came back. And then he gave this slogan. So, definitely, Jinnah was following Savarkar. And if you accuse Jinnah, Savarkar is part of that for the two-nation theory. Hello? Right. All right. Thank you, Mr. Rashid Alvi, Congress spokesperson, for joining us here. A very controversial comment has been made by Bhupesh Baghel. And I just want our viewers to hear it once more, perhaps, where he said Savarkar had proposed the two-nation theory. Jinnah supported that proposal. They tried their best not to leave the British country. Listen in, viewers, before we head to a short break. उन्होंने अध्यक्षता किया उस समय उन्होंने कहा कि दो राष्ट्र का उन्होंने स्वीकार किया और वहीं मोहम्मद जिन्ना ने 1937 में उसको स्वीकार किया। तो दो राष्ट्र के जो सिद्धांत है उसको सावरकर ने प्रस्तावित किया और उसका समर्थन जिन्ना ने किया। तो विभाजनकारी तो ये लोग हैं। देश की आजादी में उनकी भूमिका क्या रही? 1925 में बन गया था ये आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद। इनके तमाम नेताओं को समय बयान देखिए। 1942 में वो कहते हैं कि इसमें शामिल नहीं होना है, कैसे दबाया जाए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी वायसराय की चिट्ठी लिखते हैं कि ये तो अंग्रेज जाए ही मत। और अभी भी अंग्रेजों की आलोचना नहीं करते, ये गांधी की आलोचना करते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ एक शब्द भी बयान दिए हो तो बताइए। Viewers, much more coming up on the other side. Mega crackdown on terror in UP. ATS arrests Jaish terrorist in Kanpur in ISIS plot. And India marks partition horrors, Remembrance Day, but Congress politics continue. Questions PM Modi now. And BJP conducts silent march in various cities on Partition Remembrance Day. Stay tuned. In an exclusive conversation with Republic, Jammu's ADG Mukesh Singh on terror threats ahead of Independence Day said that terrorist groups are in a bid of infiltration and to target security camps to avoid any act of terror in the Union territory. Anti-drones have been installed and the public have been briefed about the threats. Speaking about the recruitment rally for Indian Army Agniveers as per Agnipath scheme, Major General Ranjan Mahajan says in total 4 districts will be covered. Best candidates will be selected through transparent process. He further revealed about a separate women's rally which will be carried out after a few days. You're watching live and breaking other top stories from across the country after the sudden demise of India's big bull Rakesh Jhunjhunwala's final rites to be reportedly performed at 5:30 p.m. today in Mumbai's Malabar Hill. Jhunjhunwala was brought dead to Breach Candy Hospital at around 6:45 a.m. this morning.
Following the demise of the ace investor of India's global history, Prime Minister Narendra Modi paid condolences to Rakesh Jhunjhunwala's family. The Prime Minister expressed grief, saying he was indomitable, full of life, witty and insightful. He has left behind an indelible contribution to the financial world. In an exclusive conversation with Republic, Jammu's ADG Mukesh Singh on terror threats ahead of Independence Day said that terrorist groups are in a bid of infiltration and to target security camps to avoid any act of terror in the Union territory. Anti-drones have been installed and the public have been briefed about the threats. Speaking about the recruitment rally for Indian Army Agniveers as per Agnipath scheme, Major General Ranjan Mahajan says in total 4 districts will be covered. Best candidates will be selected through transparent process. He further revealed about a separate women's rally, which will be carried out after a few days. You're watching live and breaking other top stories from across the country after the sudden demise of India's big bull Rakesh Jhunjhunwala's final rites to be reportedly performed at 5:30 p.m. today in Mumbai's Malabar Hill. Jhunjhunwala was brought dead to Breach Candy Hospital at around 6:45 a.m. this morning. Following the demise of the ace investor of India's global history, Prime Minister Narendra Modi paid condolences to Rakesh Jhunjhunwala's family. The Prime Minister expressed grief, saying he was indomitable, full of life, witty and insightful. He has left behind an indelible contribution to the financial world. Now, stories from the world of sport. Hubert Hurkacz booked his place in the Montreal Masters final, recovering from losing the opening set to beat Casper Ruud. He will now face either Pablo Carreño Busta or Dan Evans in the final. A goal from forward Timo Werner from his return to Leipzig was not enough as his side days after Nitish Kumar took oath as the Chief Minister of Bihar under Mahagathbandhan government, Bihar Congress in charge Bhakta Das informed that the state Congress unit met with the RJD Supremo Lalu Prasad Yadav and his son Tejaswi Yadav. He also said that the state unit of the party is also planning to hold a meeting with the Chief Minister Nitish Kumar on Sunday, August the 14th. 16 तक होने का संभावना है, जितना जल्दी हो सके होगा, और संयुक्त महागठबंधन तय कर चुका है सब कुछ, और कांग्रेस के बारे में भी जो भागीदारी होगा वो भी सम्मानजनक करने का निर्णय हो चुका है. हम सही समय पर कहेंगे. The Himachal Pradesh Assembly, in line with the future में जो भी आने वाली जनरेशन कोई भी स्पोर्ट्स की है, प्लीज आप मेहनत कीजिए और हम सब मिलके इंडिया की नाम, इंडिया की तिरंगा को हर टाइम ऊपर करते रहिए. अगस्त को हमारे देश का 75वां यौम आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो आज हम एडवांस में सेलिब्रेट करने इस पहाड़ी पर आए हैं. इस पर हम अपना तिरंगा फहराने आए हैं, लहराने आए हैं. भारत माता की जय, भारत माता की जय. फौजी ने तिरंगे की लाज रखी. अगर विजय मिली तो तिरंगा लहराया, और अगर वीरगति मिली तो तिरंगे में लिपट कर आया, और ये उस फौजी का वादा था.
अगस्त को हमारे देश का 75वां यौम आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो आज हम एडवांस में सेलिब्रेट करने इस पहाड़ी पर आए हैं। इस पर हम अपना तिरंगा फहराने आए हैं, लहराने आए हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। Uttar Pradesh anti-terrorist squad makes another arrest linked to a terror case, second arrest in just 2 days. UP ADG Law and Order says arrested Saifullah linked with Jaish-e-Mohammed terrorist Nadeem, who was arrested on Friday. Uttar Pradesh anti-terrorist squad, the latest now also coming in from Jammu. ADG speaking to Republic TV stating that all measures essentially been taken ahead of the Independence Day. Starting this edition of This is Exclusive with a story that we've been tracking very closely. Uttar Pradesh anti-terrorist squad has nabbed another terrorist associated with Jaish-e-Mohammed from Kanpur. The UP ATS had arrested Habibul Islam alias Saifullah, whose name surfaced after the ATS arrested Jaish-e-Mohammed, the terrorist Mohammed Nadeem, on 12th of August. Now, he's in fact suspected of creating at least 50 virtual IDs for many terrorists, including Pakistani and Afghani militants. Terrorists rather. Here's a Republic investigation into the case. Well, in fact, let me bring in my colleague Vivek, who's getting us the latest details. Vivek, ये बताइए कि 2 अरेस्ट अब हो चुके हैं. क्या ये मान सकते हैं कि एक तरह से कोई मॉड्यूल चलाया जा रहा था? क्योंकि अगर मोहम्मद नदीम की बात करें, मोहम्मद नदीम का भी ये कहना था कि वो कई सालों से 2018 से लगातार वो अपने हैंडलर से बात करता था, और साथ ही साथ अब जो ये नया अरेस्ट हुआ है, इसके बाद क्या ये कह सकते हैं कि एक तरह से मॉड्यूल जिसे बस्ट किया गया है? जी बिल्कुल, एक मॉड्यूल यूपी एटीएस ने बस्ट किया है और नदीम की गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार यूपी एटीएस नदीम से पूछताछ कर रही थी, और नदीम से पूछताछ में ही सैफुल्लाह का नाम निकल के सामने आया था। और सैफुल्लाह जो कि फतेहपुर का रहने वाला था, हालांकि वो मूल निवासी बिहार का है, लेकिन वो लंबे समय से फतेहपुर में रह रहा था। और यूपी एटीएस को जब नदीम से पूछताछ के बाद सैफुल्लाह की जानकारी हुई तो यूपी एटीएस की कानपुर यूनिट ने फतेहपुर से सैफुल्लाह को उठाया और उसके बाद कानपुर ला करके उससे पूछताछ की, और उस पूछताछ में तमाम अहम खुलासे हुए, जिसमें वर्चुअल आईडीज को करके जो नदीम के बारे में जानकारी मिलती कि वर्चुअल आईडीज बना करके वो तमाम विदेशी अकाउंट से बात करता था, और उसी के माध्यम से वर्चुअल आईडीज से टेलीग्राम और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने लोगों से पाकिस्तान और तालिबान में वो जोड़ा हुआ था। और अब ये पता चला है कि सैफुल्लाह ही वो मेन शख्स था जो इन वर्चुअल आईडीज को बनाने का मेन काम करता था। तो कुल मिलाकर के एक बड़ा मॉड्यूल बस्ट हुआ है, और जिस तरीके से नदीम की गिरफ्तारी के बाद तमाम अलग अलग खुलासे हुए थे, उसको कहीं ना कहीं अब वापस से जब जो उससे पूछताछ हुई नदीम से और उसके बाद सैफुल्लाह का नाम निकल के सामने आए, यह माना जा सकता है कि आने वाले समय में, क्योंकि नदीम का एक बड़ा मॉड्यूल था, ढेर सारे लोगों को वो ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता था, और उसी कड़ी में सैफुल्लाह का भी नाम निकल के सामने आया है, जो सैफुल्लाह वर्चुअल आईडीज बना करके नदीम को देता था। और 50 से अधिक ऐसे लोगों की वर्चुअल आईडीज बनी हुई थी जो लोग पाकिस्तान और तालिबान में बैठे हुए लोगों के संपर्क में थे। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा मॉड्यूल बस तो हुआ ही है, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और अभी कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, क्योंकि एक बड़ा नेक्सस था, बड़ी कोशिश थी देश को नुकसान पहुंचाने की, भारत को नुकसान पहुंचाने की, पर यूपी एटीएस ने अपनी सतर्कता से इन सभी ये जो मॉड्यूल है इसको बस किया है। नदीम के बाद सैफुल्लाह की गिरफ्तारी हुई है, और अब सैफुल्लाह की गिरफ्तारी करने के बाद अब उससे भी उसको रिमांड पे लेकर के पुलिस उससे पूछताछ करेगी, और कुछ और जो अन्य पहलू हैं वो निकल के सामने आएंगे। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से जैश-ए-मोहम्मद के दोनों आतंकी बताए जा रहे हैं, दोनों जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए थे, और इसके बाद वर्चुअल आईडीज के माध्यम से लगातार संपर्क में तो थे ही थे,
पर आने वाले दिनों में ये पाकिस्तान जाने की फिराक में भी थे और वहाँ से ट्रेनिंग लेकर के फिर ये वापस आकर के और जो अपना ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल था उसको बढ़ाने की कोशिश में थे। तो एक बड़ी साजिश थी और इसके साथ साथ पिछले दिनों हमने ये भी देखा था कि जब नदीम की गिरफ्तारी हुई थी तो नदीम की गिरफ्तारी में कैसे निकल के सामने आया था कि नुपुर शर्मा की हत्या करने का भी इनको एक टारगेट मिला हुआ था। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें जिसको लेकर के ये लोग काम कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने फिलहाल ये बड़ा एक मॉड्यूल बस्ट किया है और पुलिस उस पर लगातार यूपीएससी एटीएस पर लगी हुई है। जी विवेक, हर कोई ये जानना चाहेगा कि ये कितने सालों से सैफुल्ला नदीम ये कितने सालों से यूपी में इस मॉड्यूल के साथ जुड़े थे और आखिरकार उनकी अगर मोटिव की अगर बात करें, ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें तो वो क्या थे? क्योंकि 2018 से अगर वो लगातार अपने हैंडलर्स से बातचीत कर रहा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कई साल बीत चुके हैं, तो इससे क्या हम ये कह सकते हैं कि रिक्रूटमेंट को लेकर कहीं ना कहीं नदीम और सैफुल्ला दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? जी बिल्कुल, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हालांकि एक चीज़ में समझनी होगी कि सैफुल्ला की उम्र मात्र अभी 19 साल है, तो मात्र अभी 19 साल की उम्र, पिछले 2-3 साल से इसका भी इन्वॉल्वमेंट इन चीज़ों में बताया जा रहा है। तो इस नई उम्र के लोगों को कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश जैसे मोहम्मद की थी और उसी कड़ी में पहले नदीम फंसा और उसके बाद सैफुल्ला फंसा। हालांकि सैफुल्ला की जो वर्चुअल आईडीज़ का जो कॉन्सेप्ट है, वर्चुअल आईडीज़ की जो मैनेज करने का जो चीज़ है, वो सिर्फ और सिर्फ वो सैफुल्ला ही करता था और नदीम के लिए भी वो सैफुल्ला ही मैनेज करता था। पिछले 3 से 4 साल का इनका कनेक्शन तो फिलहाल बताया ही जा रहा है, लेकिन इसके पीछे का मॉड्यूल और कितना बड़ा है और कितने लोग जुड़े हुए थे, क्योंकि एक बड़ी साजिश, बड़े लोगों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश। और अभी जो फिलहाल का इनका टारगेट था वो नुपुर शर्मा की हत्या करने का टारगेट, जैसा पिछले दिनों बताया गया था पुलिस के द्वारा कि नदीम ने पूछताछ में बताया कि उसको जैश ए मोहम्मद की तरफ से, उसके अपने आकाओं की तरफ से नुपुर शर्मा की हत्या करने को लेकर के भी कहा गया था। तो ये लोग अलग अलग ऐसे टारगेट्स पर काम कर रहे थे और कहीं ना कहीं एक इस देश को दहलाने की कोशिश में भी थे। इस देश में कहीं ना कहीं जो अस्थिरता है उसको पैदा करने की कोशिश में थे। पुलिस लेकिन फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर चुकी है। आज सैफुल्ला की जिसमें गिरफ्तारी हुई है और जो नदीम है उससे तो पूछताछ चल ही रही है, लेकिन अब सैफुल्ला से भी पुलिस अपनी पुलिस कस्टडी रिमांड में लेकर के उससे पूछताछ करेगी और वो सारे पहलू जानने की कोशिश करेगी कि इतनी कम उम्र में जो इन लोगों का जो एक तरीके से ब्रेन वॉश हुआ है वो किस कारण से हुआ है और उसके बाद और इनके मंसूबे क्या थे। तमाम ऐसे पहलू हैं जिस पर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और पुलिस का मानना है कि जल्द ही इन तमाम पहलुओं को लेकर के पुलिस जल्द ही खुलासा करेगी। और साथ ही साथ पुलिस ने यह भी कहा कि 15 अगस्त के पहले जिस तरीके से इनके मंसूबे थे देश में कहीं ना कहीं कुछ गलत करने के, तो वो एक बड़ा रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए वो एक बड़ा इनके मंसूबों पर पानी फेरा है पुलिस ने, यूपीएटीएस ने। और यूपीएटीएस लगातार इस तरीके के ऑपरेशन, क्योंकि हमने देखा कि पिछले एक हफ्ते में 3 बड़ी गिरफ्तारियां यूपीएटीएस ने की। इन दोनों के अलावा एक सुबाउल्लाह की भी गिरफ्तारी हमने देखा कि आजमगढ़ से हुई थी और उसके बाद इन दोनों की गिरफ्तारियां। तो ये एक बड़ा रैकेट लगातार चल रहा है जिसको पुलिस ने एक तरीके से इसको खोला है और अब पूछताछ के बाद देखना होगा कि और इनके मंसूबों के बारे में क्या जानकारी निकल के सामने आ पाती है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक. We'll also get at more details. Now, what exactly has transpired in the last few days? The first big arrest that was basically made was on 12th of August, and thereafter there was more lead that was received by the Uttar Pradesh's anti-terrorist squad that basically led to another terrorist associated with Jaish-e-Mohammed being arrested from Kanpur. In fact, we're given to understand that Habibul Islam, alias Saifullah, whose name basically surfaced after the arrest of Mohammed Nadeem, was arrested because they suspect that it is he who created at least 50 virtual IDs for many terrorists, including Pakistani and Afghani terrorists. Take a look at this report. On Friday, the ATS nabbed Mohammed Nadeem, a Jaish-e-Mohammed and Tehreek-e-Taliban Pakistan-linked terrorist from Uttar Pradesh, Saharanpur, thus averting a major threat ahead of Independence Day. And after 2 days, the UP ATS nabbed 19-year-old Habibul Islam, alias Saifullah, for allegedly having links with terror group Jaish-e-Mohammed and being in touch with handlers in Pakistan and Afghanistan. This comes close on the heels of the arrest of Nadeem, who has tasked with carrying out a Fidain attack on suspended BJP spokesperson Nupur Sharma. Habibul Islam उर्फ सैफुल्लाह को
विवेचक के निर्देश पे फतेहपुर से कानपुर लाकर फील्ड यूनिट कानपुर द्वारा पूछताछ की गई तथा साक्ष्यों के आधार पर इसकी गिरफ्तारी की गई। यह व्यक्ति मूलतः जनपद मोतिहारी बिहार का रहने वाला है। हबीबुल द्वारा यह स्वीकार किया गया कि वह नदीम को जानता था तथा दोनों एक ही आतंकी नेटवर्क जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए थे। हबीबुल इस्लाम वर्चुअल आईडी बनाने में एक्सपर्ट है तथा इसी में नदीम सहित कई पाकिस्तानी एवं अफगानिस्तानी आतंकवादियों को लगभग 50 वर्चुअल आईडी बनाकर दी है। And amid the alleged links between the two arrested, Republic went to the house of Mohammad Nadeem to investigate the matter. His mother says he's innocent. मेन गेट है, यहाँ पर देख सकते हैं एक बरामदा है जहाँ पर उनके पिताजी जो हैं वो लेटे हुए हैं और आस पड़ोस के कुछ लोग भी यहाँ पर बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ ये हम घर के अंदर आ गए और यहाँ पर जो है अंधेरा है। मोहम्मद नदीम की माँ जो है यहाँ पर लेटी हुई हैं, उनकी तबीयत जो है वो बहुत ही ख़राब बताई जा रही है। और साथ ही साथ आस पड़ोस की कुछ आंटी जी, ये बताइए कि नदीम के बारे में, नदीम कैसा लड़का था? भाई वो तो कुरान का पढ़ा लिखा, लेकिन उस पर ये आरोप लगा है कि वो आतंकी संगठनों के साथ। भाई देखो कोई लगाओ, मैं तो ऐसा देखना आई, मरीज पड़ी बेचारी ऐसा देखना आई मैं। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देख सकते हैं साफ तौर पर नदीम की माता की भी तबीयत खराब है और नदीम के पिताजी की भी तबीयत खराब है, वो भी लेटे हुए हैं। आइए हम चल के आपको उस कमरे की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं जिस कमरे से नदीम को गिरफ्तार किया गया था। आप ये बताइए कि आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? जी। ये बताइए, आप नदीम के दोस्त हैं? नहीं जी, पड़ोसन गांव के हैं जी, बस गांव की तबीयत खराब है, आते रहते हैं इनके पास बीमार को देखने के लिए। तो नदीम से आपकी बातचीत कभी होती थी? ना, आज तक कभी नहीं? ना जी, कोई बात नहीं होती। अच्छा, कौन से कमरे से नदीम को गिरफ्तार किया गया था, ये दिखाएं। आ जाइए, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि रात के लगभग 12:30 बजे के आसपास यूपीएटीएस की टीम आई थी और यूपीएटीएस की टीम, यही कमरा है वो, देखिए इसी कमरे में नदीम और उसका भाई तैमूर दोनों सोते थे और 12:30 बजे के आसपास जो है नदीम को इसी कमरे से गिरफ्तार किया गया। अंदर की तस्वीरें देखिए, 2 खाट यहाँ पर लगे हुए हैं और एक पर तैमूर सोया था, एक पर नदीम सोया था। और रात के 12:30 बजे के आसपास इसी कमरे से जो है वो नदीम को गिरफ्तार किया है यूपीएटीएस की टीम ने। जैश ए मोहम्मद और टीटीपी के साथ जो है वो संपर्क में लगातार था नदीम, और उसके जो चैट हुए हैं सैफुल्लाह के साथ, उससे साफ तौर पर यही खुलासा हुआ है कि कई लोगों को साथ में अपने जोड़ने का भी उसको काम सौंपा गया था, खासकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों से। His father says the allegations are baseless. हमें इसके बारे में नहीं मालूम। अगर उसने इतनी गलती कर दी तो हमारे लिए अच्छा नहीं है। As the Uttar Pradesh police digs out the fact in the case, more facts are yet to be unraveled. Bureau Report, Republic TV. Terror groups across the border they certainly appear to be extremely active at this point in time, and that is the reason why a lot of the state police right now, they have upped the ante. Speaking to Republic on the terror threats against the nation ahead of the Independence Day, ADG Jammu Mukesh Kumar spoke on how exactly our security forces essentially keeping a constant vigil across the border and also in the hinterland to avert these threats. He spoke to my colleague Gursimran. कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं जो ये दिखाता है कि आतंकी संगठन जो हैं लगातार प्रयास में जुड़े हैं, चाहे वो इन्फिल्ट्रेशन के ज़रिए हो, चाहे उसकी इन्फिल्ट्रेशन की अटेम्प्ट्स हों, चाहे वो किसी को टारगेट करना हो, चाहे कि सिक्योरिटी फोर्सेस कैंप्स को टारगेट करना हो। इस तरह के इनपुट्स आ रहे हैं और हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे पास सफिशिएंट फोर्स अवेलेबल है। फोर्स को सेंसिटाइज भी किया गया है ग्राउंड लेवल पे। सभी डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज डीआईजीज को सेंसिटाइज किया गया है कि किस तरह के थ्रेट परसेप्शंस हैं और उनके लिए जो है प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या लेने हैं। जो कल का वाक़या हुआ है जो आर्मी कैंप वाला, उसके मद्देनज़र भी कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए हैं ताकि जो हमारे सिक्योरिटी कैंप्स वैम्प्स जो हैं, चाहे पुलिस स्टेशंस हो, इनको सिक्योर रखा जाए।
सर लगातार जो हमने देखा कि ड्रोन और स्टिकी बॉम्ब एक बड़ी थ्रेट के तौर पर उभर कर आए हैं। पहले भी एक हमला हुआ जिसकी आप जांच भी कर रहे हैं, तो इन दोनों से निपटने के लिए किस तरह से तैयारी जो है की गई है, क्योंकि यहाँ पर जो वेन्यू है जिसमें 15 अगस्त का प्रोग्राम होना है उसको किस तरह से सिक्योर किया जाए? जो वेन्यू है उसकी सिक्योरिटी के तो बहुत पुख्ता इंतज़ाम कर लिए गए हैं, एंटी ड्रोन मेजर्स भी लगाए गए हैं। जहाँ तक रही ड्रोन के ज़रिए वेपन्स भेजने का सवाल जो है, उस पे बॉर्डर ग्रिड को काफ़ी मजबूत किया गया है। बॉर्डर पे टेक्निकल गैजेट्स वगैरह भी अच्छी मात्रा में लगाए हैं, ताकि इस तरह के जो ड्रोन के ज़रिए जो थ्रेट्स हैं उसको मिटिगेट जितना भी हो सके, जिस हद तक भी वो किया जाए। इसके अलावा मुख्तलिफ नाके हैं जो पूरे जम्मू और कश्मीर के बीच में जितनी भी सड़कें हैं उस पे लगाए गए हैं। नाकों में भी टेक्निकल गैजेट्स वगैरह लगाए गए हैं, और उनके जो नफरी डिप्लॉयड है उनको भी सेंसिटाइज़ किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि किसी भी तरह की जो ड्रोन के ज़रिए जो वेपन्स की स्मगलिंग हो रही है या ट्रांसपोर्टेशन हो रही है उसको हम प्रिवेंट कर सकेंगे। पिछले 1 महीने में बहुत कम इस तरह के इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं, और मुझे उम्मीद है कि इसको भी हम नाकाम कर देंगे। Well, that was an exclusive interview by ADG Jammu to my colleague Gursimran about the threats that we are facing at this point in time. And essentially what has happened is that launchpads across the border have also been extremely active. But there has been multiple attempts that have been made to infiltrate, but that has been quite unsuccessful. Getting us this exclusive report was my colleague Gursimran, who's also joining us live on this broadcast. Gursimran, once again, the only reporter to get us this exclusive report from Jammu about the threats that we are facing at this point in time. First, I would like to ask you, in terms of the nature of the threats that have been coming in, what is it that it looks like at this point in time? Is it directly coming in from those terrorists who are making the attempt to infiltrate, or is it also about those sleeper cells which have been extremely active in Jammu and Kashmir? See, Shavan, this is a multi-level threat that is coming not only from the terrorists who are waiting in launchpad, but also from the overground worker, as well as terrorists who have managed to sneak in inside the territory. Because we know that it's today itself that the Northern Army commander, he himself has visited the place where a Fidain attack was planned by the Pakistani terrorists in the Rajouri district's Pargal area that was foiled by the Indian Army. But in that retaliation, 4 Jawans of the Indian Army attained martyrdom. And today the Army commander, Northern Army commander himself was at that very spot. He reviewed the operational preparedness as well as the prevailing security scenario, because as per the inputs that we are getting in, there are still more than 2 terrorists that are active in the same area, and multiple terrorists are waiting in the launch pads, as being confirmed by the ADG Jammu Mukesh Singh, who has shared the key details about the terror plot of targeting the security force and their installation. Now coming to the threat, there is a multi-level threat that is being posed not only by the Pakistani terrorists but also from the overground workers and the sleeper cells of the terrorists, because they have been into the radicalizing these terror ranks and the terrorists and even the youth of the country, so that they can join the terror rank and carry out a major terror strike. So this all is being taken care by the Jammu and Kashmir police. They are trying to make it very sure that these terrorists and their terror sympathizers are caught and neutralized well within a time, because the agency's inputs suggest otherwise, that these terrorists are planning something big. They are planning to attack the security forces installations in the coming days, especially ahead of the 15th August and during the 15th August. Shawan. Well, Gursimran, also with regards to the situation right now across the border, at least in the launch pads, what is it that you are picking up? Is there an increased activity, keeping in mind that they haven't really been very successful in making those infiltration attempts? The grid, the security grid does appear to be quite robust at this point in time. Yes, the security grid is robust, but today the Northern Army commander has also said one important thing, that it is not possible to stop 100% of the infiltration. Though what the forces are doing is that they are working round the clock in synergy with each other. And if there is any infiltration that is taking place, the sister agencies are informed well within the time, and they are neutralizing that terrorist before reaching the hinterland or before establishing the base. So this has been one of the biggest achievements of the forces, the synergy that has been between the forces that has led to complete wipe out of the total
leadership of the terror outfit, be it Jaish-e-Mohammed, Lashkar-e-Toiba, or their outfits in Jammu and Kashmir. So this is something that has helped the security forces. But yes, the infiltration is a challenge. Apart from that, the weapons are coming from across the border. This has been the threat because we have seen major terror ammunitions being recovered by the security forces time and time, even from the Srinagar city and even from Jammu. So this clearly shows that the Pakistan is now relying on the drones to push weapons into the Indian territory and the local terrorists to carry out terror strikes. Well, Gursimran, just thank you very much for getting us all the latest details on this story. We'll be keeping a close watch, and given the fact that there have been increased activity, at least across the border, and the fact that there has been an attempt that has been made by multiple terror groups to carry out with the infiltration attempts across the border. On the other side, as India marks the Partition Horrors Remembrance Day, Congress politics continues, questions Prime Minister Modi now. These kind of trainings are very important because this entire region is more of the mountainous rather than plains. So the Jawan coming to the Kargil battle school has to go all kind of training. हमारे सेना में लड़ाई लड़ने की इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास तथा दुश्मन को निष्क्रिय करने का ताकत है। You have to be physically fit if you have to be in this kind of weather and in this kind of region. And now let's get you some news from across the country in brief. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has received death threats in a letter addressed to Devendra Tiwari, National President of the Bharatiya Kisan Manch. One Mohammad Ajmal said that the regime of Chief Minister Adityanath, people... Field Marshal Sam Manekshaw once famously said that if a man says he's not afraid of dying, he's either lying or he's a Gurkha. मैं जो भी आने वाली जनरेशन कोई भी स्पोर्ट्स की है, प्लीज आप मेहनत कीजिए और हम सब मिलके इंडिया की नाम, इंडिया की तिरंगा को हर टाइम ऊपर करते रहिए। ये चाहता हूँ, हमेशा दिल में सोता हूँ शाम को, मेरे को दर्द होता है कलेजे के अंदर कि चाइना आए तो आज भी मैं खाने के लिए तैयार हूँ। युद्ध भूमि में दुश्मन से जब हम लड़ा करते थे, तूफानों को मोड़ दिया करते थे। अभी जितना बॉर्डर पर मारते हैं उतना तो हम रोड पे छोड़ दिया करते थे। Even as the nation celebrates the 75th independence year, you have the Congress quoting yet another controversy. This time, Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel has made a controversial comment comparing Veer Savarkar to Jinnah. He says Savarkar had proposed the two-nation theory. Jinnah supported that proposal. They tried their best not to leave the British country. Now, it remains to be seen which history is the Chhattisgarh Chief Minister essentially trying to refer to, given the fact that this is largely been criticized by one and all
be it historians or for that matter even political leaders right now, saying that the simplicity that with which it has been attached right now, simply equating the both, seems to be completely wrong. And secondly, there appears to be an agenda behind this entire attempt that has now been made by the Congress party to try and equate Jinnah with Veer Savarkar. Let's listen in to the controversy that was quoted by the Chhattisgarh Chief Minister following this remark that he made. Listen. उस समय उन्होंने कहा कि दो राष्ट्र का उन्होंने स्वीकार किया और वहीं मोहम्मद जिन्ना ने 1937 में उसको स्वीकार किया। तो दो राष्ट्र के जो सिद्धांत है उसको सावरकर ने प्रस्तावित किया और उसका समर्थन जिन्ना ने किया। तो विभाजनकारी तो ये लोग हैं। देश की आजादी में उनकी भूमिका क्या रही? 1925 में बन गया था ये आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद। इनके तमाम नेताओं को समय बयान देखिए। 1942 में वो कहते हैं कि इसमें शामिल नहीं होना है, कैसे दबाया जाए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी वायसराय को चिट्ठी लिखते हैं कि ये तो अंग्रेज जाए ही मत, और अभी भी अंग्रेजों की आलोचना नहीं करते, ये गांधी की आलोचना करते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ एक शब्द भी बयान दिए हैं तो बताइए। Let me also bring in my colleague Madhurima, who's been tracking the story very closely. Yet another controversial remark that has now been made by the Chhattisgarh Chief Minister. Madhurima, what more are you picking up? Is there any clarification, or this is yet another off-the-cuff remark that has been made by the Chief Minister? Well, Shravan, this is not the first time that the Grand Old Party has picked up Savarkar to attack the BJP by linking its ideologue RSS. There have been multiple times where the Congress party has picked up Savarkar to attack the BJP. However, the BJP has also lashed back very severely, asserting that it is not the BJP or Savarkar or the RSS which had the monarchical high-headedness in their bloodline, and that they have been serving the country and their ideology has been to serve the country. However, the Congress party has always said that Savarkar was not the kind of hero the BJP wants to portray it. And once again, we have Bhupesh Baghel who made this statement that Savarkar had proposed the two-nation theory. Jinnah supported that proposal, and they tried their best not to make sure that the British do not leave the country. However, this also comes after Shravan, when the BJP had shared a video on Partition blaming Jawaharlal Nehru for it, and attacking which this particular comment of against Veer Savarkar was given by Bhupesh Baghel. So war of words has increased between the two national parties just ahead of 76th Independence Day. That will be tomorrow. We'll be celebrating all across the country. But once again, the Congress party with Bhupesh Baghel inciting controversy with dragging the Savarkar's name just ahead of Independence Day. Back to you. Well, thank you very much, Madhurima, for getting us the latest details. Yet another controversy quoted by the Congress party, not just the Chhattisgarh Chief Minister. A short while back, you also had senior Congress leader Jairam Ramesh taking to Twitter, talking about the Partition Horror Remembrance Day. This is also once again been politicized by the Congress party, where essentially the Congress party is targeting Prime Minister Modi.
NCP leaders Anil Deshmukh and Nawab Malik and Shiv Sena leader Sanjay Raut, who have been arrested in money laundering cases by the Enforcement Directorate, are now lodged in Arthur Road Jail in 3 different barracks. However, Malik, who was arrested in February, is currently admitted into a hospital in Kurla for treatment. Shiv Sangram party leader Vinayak Mehte killed in road accident at Khopli Tunnel in Maharashtra's Raigarh. Maharashtra's Chief Minister Eknath Shinde speaks on his demise, stating he had contributed significantly towards the Maratha Andolan and was a good leader. A Dalit child allegedly beaten severely, causing his death over drinking water in Rajasthan's Jalore. He was allegedly beaten up for touching a water container at his school and was beaten by his teacher. The big bull of the Indian markets, Rakesh Jhunjhunwala, is no more. Born in the year 1960, Jhunjhunwala passed away at the age of 62. He was brought dead this morning to Mumbai's Breach Candy Hospital at 6:45 a.m. Heading companies, Hangama.
And now let's get you some news from across the country in brief. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has received death threats in a letter addressed to Devendra Tiwari, National President of the Bharatiya Kisan Manch. One Mohammad Ajmal said that the regime of Chief Minister Adityanath, people like Tiwari have been too indulgent in Gauraksha and Gaushalas and warned them to mend their ways or face dire repercussions. President Draupadi Murmu will deliver her maiden address to the nation on August 14th on the eve of Independence Day. The address by the president is a regular feature of Independence Day celebrations. On the eve of Independence Day, Republic from Siachen base camp. Bigger challenge for the Indian Army, the soldiers, is not only fighting with the enemy but also in adverse.
The Amity BBA has been ranked India's #1 BBA in the recently released Times of India B School 2022 rankings, a testimony to Amity BBA's globally benchmarked standards in education. The big bull of the Indian markets, Rakesh Jhunjhunwala, is no more. Born in the year 1960, Jhunjhunwala passed away at the age of 62. He was brought dead this morning to Mumbai's Breach Candy Hospital at 6:45 a.m. Heading companies, Hungama Media and Aptech, among others. The veteran stock market investor had recently inaugurated the low-budget airlines Akasha Air, often referred to as India's own Warren Buffett. He passed away at the age of 62 following health complications. In other news, a total of 12 bodies recovered so far in August 11 boat capsize incident near Banda in UP. Rescue operations continue following disaster as NDRF and SDRF continue to look for those remaining. Shiv Sangram party leader Vinayak Mehta killed in road accident at Khopoli tunnel in Maharashtra's Raigad. Maharashtra's Chief Minister Eknath Shinde speaks on his demise, stating he had contributed significantly towards the Maratha Andolan and was a good leader. A Dalit child allegedly beaten severely, causing his death over drinking water in Rajasthan's Jalore. He was allegedly beaten up for touching a water container at his school and was beaten by his teacher. Yeah!
मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। 76वें स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। इस गौरवपूर्ण अवसर पर आपको संबोधित करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक स्वाधीन देश के रूप में भारत 75 साल पूरे कर रहा है। 14 अगस्त के दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस स्मृति दिवस को मनाने का उद्देश्य सामाजिक सद्भाव, मानव सशक्तिकरण और एकता को बढ़ावा देना है। 15 अगस्त 1947 के दिन हमने औपनिवेशिक शासन की बेड़ियों को काट दिया था। उस दिन हमने अपनी नियति को नया स्वरूप देने का निर्णय लिया था। उस शुभ दिवस की वर्षगांठ मनाते हुए हम लोग सभी स्वाधीनता सेनानियों को सादर नमन करते हैं। उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया ताकि हम सब एक स्वाधीन भारत में सांस ले सके। भारत की आज़ादी हमारे साथ साथ विश्व में लोकतंत्र के हर समर्थक के लिए उत्सव का विषय है। जब भारत स्वाधीन हुआ तो अनेक अंतर्राष्ट्रीय नेताओं और विचारकों ने हमारी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की सफलता के विषय में आशंका व्यक्त की थी। उनकी इस आशंका के कई कारण भी थे। उन दिनों लोकतंत्र आर्थिक रूप से उन्नत राष्ट्र तक ही सीमित था। विदेशी शासकों ने वर्षों तक भारत का शोषण किया था। इस कारण भारत के लोग गरीबी और अशिक्षा से जूझ रहे थे। लेकिन भारतवासियों ने उन लोगों की आशंकाओं को गलत साबित कर दिया। भारत की मिट्टी में लोकतंत्र की जोड़ें लगातार गहरी और मजबूत होती गई। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में वोट देने का अधिकार प्राप्त करने के लिए महिलाओं को लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। लेकिन हमारे गणतंत्र की शुरुआत से ही भारत ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया। इस प्रकार आधुनिक भारत के निर्माताओं ने प्रत्येक वयस्क नागरिकों को राष्ट्र निर्माण की सामूहिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। भारत को यह श्रेय जाता है कि उसने विश्व समुदाय को लोकतांत्रिक की वास्तविक क्षमता से परिचित कराया। मैं मानती हूँ कि भारत की ये उपलब्धि केवल संयोग नहीं थी। सभ्यता के आरंभ में ही भारत भूमि के संतों और महात्माओं ने सभी प्राणियों की समता व एकता पर आधारित जीवन दृष्टि विकसित कर ली थी। महात्मा गांधी जैसे महानायक के नेतृत्व में हुई स्वाधीनता संग्राम के दौरान हमारे प्राचीन जीवन मूल्यों को आधुनिक युग में फिर से स्थापित किया गया। इसी कारण से हमारे लोकतंत्र में भारतीयता के तत्व दिखाई देते हैं। गांधी जी सत्ता के विकेंद्रीकरण और जनसाधारण को अधिकार संपन्न बनाने के पक्षधर थे। पिछले 75 सप्ताह से हमारे देश में स्वाधीनता संग्राम के महान आदर्शों का स्मरण किया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मार्च 2021 में दांडी यात्रा की स्मृति को फिर से जीवंत रूप देकर शुरू किया गया है। उस युगांतरकारी आंदोलन में हमारे संघर्ष को विश्व पटल पर स्थापित किया था। उसे सम्मान देकर हमारे इस महोत्सव की शुरुआत की गई। ये महोत्सव भारत की जनता को समर्पित है। देशवासियों द्वारा हासिल की गई सफलता के आधार पर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प भी इस उत्सव का हिस्सा है। हर आयु वर्ग के नागरिक पूरे देश में आयोजित इस महोत्सव के कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। ये भव्य महोत्सव अब हर घर तिरंगा अभियान के साथ आगे बढ़ रहा है। आज देश के कोने कोने में हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा है। स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों के प्रति इतने व्यापक स्तर पर लोगों में जागरूकता को देखकर हमारे स्वाधीनता सेनानी अवश्य प्रफुल्लित हुए होते। हमारा गौरवशाली स्वाधीनता संग्राम इस विशाल भारत भूमि में बहादुरी के साथ संचालित होता रहा। अनेक महान स्वाधीनता सेनानियों ने वीरता के उदाहरण प्रस्तुत किए और राष्ट्र जागरण की मशाल अगली पीढ़ी को सौंपे।
अनेक वीर योद्धाओं तथा उनके संघर्षों, विशेषकर किसानों और आदिवासी समुदाय के वीरों का योगदान एक लंबे समय तक सामूहिक स्मृति से बाहर रहा। पिछले वर्ष से हर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है। हमारे जनजातीय महानायक केवल स्थानीय या क्षेत्रीय प्रतीक नहीं है, बल्कि ये पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। प्यारे देशवासियों, एक राष्ट्र के लिए, विशेष रूप से भारत जैसे प्राचीन देश के लंबे इतिहास में 75 वर्ष का समय बहुत छोटा प्रतीत होता है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर ये कालखंड एक जीवन यात्रा जैसा है। हमारे वरिष्ठ नागरिकों ने अपने जीवन काल में अद्भुत परिवर्तन देखे हैं। ये गवाह है कि कैसे आज़ादी के बाद सभी पीढ़ियों ने कड़ी मेहनत की, विशाल चुनौतियों का सामना किया और स्वयं अपने भाग्य विधाता बने। इस दौर में हमने जो कुछ सीखा है वो सब उपयोगी साबित होगा, क्योंकि हम राष्ट्र की यात्रा में एक ऐतिहासिक पड़ाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम सब 2047 में स्वाधीनता के शताब्दी उत्सव तक की 25 वर्षों की अवधि यानी भारत के अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा संकल्प है कि वर्ष 2047 तक हम अपने स्वाधीनता सेनानियों के सपनों को पूरी तरह साकार कर लेंगे। इसी कालखंड में हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान का निर्माण करने वाला विभूतियों के विजन को साकार कर चुके होंगे। एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में हम पहले से ही तत्पर हैं। वो एक ऐसा भारत होगा जो अपनी संभावनाओं को साकार कर चुका होगा। दुनिया ने हाल के वर्षों में एक नए भारत को उभरते हुए देखा है। खासकर कोविड-19 के प्रकोप के बाद इस महामारी का सामना हमने जिस तरह किया है उसकी सर्वत्र सराहना की गई है। हमने देश में ही निर्मित वैक्सीन के साथ मानव इतिहास का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया। पिछले महीने हमने 200 करोड़ वैक्सीन कवरेज का आंकड़ा पार कर दिया है। इस महामारी का सामना करने में हमारी उपलब्धियां विश्व के अनेक विकसित देशों से अधिक रही है। इस प्रशंसनीय उपलब्धि के लिए हम अपने वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिक्स और टीकाकरण से जुड़े कर्मचारियों के आभार हैं। इस आपदा में कोरोना योद्धाओं द्वारा किया गया योगदान विशेष रूप से प्रशंसनीय है। कोरोना महामारी ने पूरे विश्व में मानव जीवन और अर्थव्यवस्थाओं पर कठोर प्रहार किया है। जब दुनिया इस गंभीर संकट के आर्थिक परिणामों से जूझ रही थी, तब भारत ने स्वयं को संभाला और अब पुनः तीव्र गति से आगे बढ़ने लगा है। इस समय भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही प्रमुख अर्थव्यवस्था में से एक है। भारत को स्टार्टअप इकोसिस्टम का विश्व में ऊंचा स्थान है। हमारे देश में स्टार्टअप्स की सफलता, विशेषकर यूनिकॉर्न्स की बढ़ती हुई संख्या हमारी औद्योगिक प्रगति का शानदार उदाहरण है। विश्व में चल रही आर्थिक कठिनाई के विपरीत भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने के श्रेय सरकार तथा नीति निर्माताओं को जाता है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के द्वारा कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जा रहा है। परिवहन के जल, थल, वायु आदि पर आधारित सभी माध्यमों को भलीभांति एक दूसरे के साथ जोड़कर पूरे देश में आवागमन को सुगम बनाया जा रहा है। प्रगति के प्रति हमारे देश में दिखाई दे रही उत्साह का श्रेय कड़ी मेहनत करने वाले हमारे किसान व मजदूर भाई बहनों को भी जाता है। साथ ही व्यवसाय की सूझबूझ से समृद्धि का सृजन करने वाले हमारे उद्यमियों को भी जाता है। सबसे अधिक खुशी की बात है कि देश का आर्थिक विकास और अधिक समावेशी होता जा रहा है तथा क्षेत्रीय विषमताएं भी कम हो रही है। लेकिन ये तो केवल शुरुआत ही है।
दूरगामी परिणाम वाले सुधारों और नीतियों द्वारा इन परिवर्तनों की आधार भूमि पहले से ही तैयार की जा रही थी। उदाहरण के लिए डिजिटल इंडिया अभियान द्वारा ज्ञान पर आधारित अर्थव्यवस्था की आधारशिला स्थापित की जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य भावी पीढ़ी को औद्योगिक क्रांति के अगले चरणों के लिए तैयार करना तथा उन्हें हमारी विरासत के साथ फिर से जोड़ना भी है। आर्थिक प्रगति से देशवासियों का जीवन और भी सुगम होता जा रहा है। आर्थिक सुधारों के साथ साथ जन कल्याण के नए कदम भी उठाया जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की सहायता से गरीब के पास स्वयं का घर होना अब एक सपना नहीं रह गया, बल्कि सच्चाई का रूप ले चुका है। इसी तरह जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना पर कार्य चल रहा है। इन उपायों का और उसी तरह के अन्य प्रयासों का उद्देश्य सभी को, विशेषकर गरीबों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। भारत में आज संवेदनशीलता व करुणा के जीवन मूल्यों को प्रमुखता दी जा रही है। इन जीवन मूल्यों का मुख्य उद्देश्य हमारे वंचित, जरूरतमंदों तथा समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों के कल्याण हेतु कार्य करना है। हमारे राष्ट्रीय मूल्यों को नागरिकों के मूल कर्तव्यों के रूप में भारत के संविधान में समाहित किया गया है। देश के प्रत्येक नागरिक से मेरा अनुरोध है कि वे अपने मूल कर्तव्यों के बारे में जानें, उनका पालन करें, जिससे हमारा राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छू सके। प्यारे देशवासियों, आज देश में स्वास्थ्य, शिक्षा और अर्थव्यवस्था तथा उनके साथ जुड़े अन्य क्षेत्रों में जो अच्छे बदलाव दिखाई दे रहे हैं, उनके मूल में सुशासन पर विशेष बल दिए जाने की प्रमुख भूमिका है। जब राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से कार्य किया जाता है तो उसका प्रभाव प्रत्येक निर्णय एवं कार्य क्षेत्र में दिखाई देता है। ये बदलाव विश्व समुदाय में भारत की प्रतिष्ठा में भी दिखाई दे रहा है। भारत के नया आत्मविश्वास का स्रोत देश के युवा, किसान और सबसे बढ़कर देश की महिलाएं हैं। अब देश में स्त्री पुरुष के आधार पर असमानता कम हो रही है। महिलाएं अनेक रूढ़ियों और बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ रही हैं। सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं में उनकी बढ़ती भागीदारी निर्णायक साबित होगी। आज हमारी पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या 14 लाख से कहीं अधिक है। हमारे देश की बहुत सी उम्मीदें हमारी बेटियों पर टिकी हुई है। समुचित अवसर मिलने पर वह शानदार सफलता हासिल कर सकती है। अनेक बेटियों ने हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों में देश का गौरव बढ़ाया है। हमारे खिलाड़ी अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। हमारे बहुत से विजेता समाज के वंचित वर्गों में से आते हैं। हमारी बेटियां फाइटर पायलट से लेकर स्पेस साइंटिस्ट होने तक हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहे हैं। प्यारे देशवासियों, जब हम स्वाधीनता दिवस मनाते हैं तो वास्तव में हम अपनी भारतीयता का उत्सव मनाते हैं। हमारा भारत अनेक विविधताओं से भरा देश है, परंतु इस विविधता के साथ ही हम सभी में कुछ ना कुछ ऐसा है जो एक समान है। यही समानता हम सभी देशवासियों को एक सूत्र में पिरोती है तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। भारत अपने पहाड़ों, नदियों, झीलों और वनों तथा उन क्षेत्रों में रहने वाले जीव जंतुओं के कारण भी अत्यंत आकर्षक है। आज जब हमारे पर्यावरण के सम्मुख नई नई चुनौतियां आ रही है, तब हमें भारत की सुंदरता से जुड़ी हर चीज का दृढ़तापूर्वक संरक्षण करना चाहिए। जल, मिट्टी और जैविक विविधता का संरक्षण हमारी भावी पीढ़ियों के प्रति हमारा कर्तव्य है। प्रकृति की देखभाल माँ की तरह करना हमारी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। हम भारतवासी अपनी पारंपरिक जीवन शैली से पूरी दुनिया का सही राह दिखा सकते हैं। योग एवं आयुर्वेद
विश्व समुदाय को भारत का अमूल्य उपहार है, जिसकी लोकप्रियता पूरी दुनिया में निरंतर बढ़ रही है। प्यारे देशवासियों, हमारे पास जो कुछ भी है वो हमारी मातृभूमि का दिया हुआ है। इसलिए हमें अपने देश की सुरक्षा, प्रगति और समृद्धि के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर देने का संकल्प लेना चाहिए। हमारे अस्तित्व की सार्थकता एक महान भारत के निर्माण में ही दिखाई देगी। कन्नड़ भाषा के माध्यम से भारतीय साहित्य को समृद्ध करने वाले महान राष्ट्रवादी कवि कुवेंपु ने कहा है, नानु अड़िवे नीनु अड़िवे नम्मा एलुबुगोड़ मेले मूडुबुदु नव भारत दलीले। अर्थात मैं नहीं रहूँगा, नहीं रहेंगे तुम, परंतु हमारी अस्थियों पर उदित होगी नई भारत की महागाथा। उस राष्ट्रवादी कवि का ये स्पष्ट आह्वान है कि मातृभूमि तथा देशवासियों के उत्थान के लिए सर्वस्व बलिदान करना हमारी आदर्श होना चाहिए। इन आदर्शों को अपनाने के लिए मैं अपने देश के युवाओं से विशेष अनुरोध करती हूँ। वे युवा ही 2047 के भारत का निर्माण करेंगे। अपना संबोधन समाप्त करने से पहले मैं भारत के सशस्त्र बलों, विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों और अपनी मातृभूमि को गौरवान्वित करने वाले प्रवासी भारतीयों को स्वाधीनता दिवस की बधाई देती हूँ। मैं सभी देशवासियों के सुखद और मंगलमय जीवन के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। All right, we just heard President Murmu's address to the nation as India celebrates the 75th Independence Day. And she made a couple of very, very important points, saying that we must respect the resources and use them wisely. She also said it's time for the rise of New India. Much more coming up on the other side, viewers, starting with India marking Partition horrors Remembrance Day. But Congress politics continue, questions PM Modi now. And Baghel court's controversy on the eve of Independence Day equates Savarkar to Jinnah. The Himachal Pradesh Assembly, in line with a few other BJP-ruled states, passed a bill to curb the mass conversions and raise the maximum punishment to 10 years of imprisonment in Freedom of Religion Act. हिमाचल प्रदेश में आपने देखा होगा कि जो एक नई परिस्थितियां बन रही थी, कई वर्षों से हम देख रहे थे हिमाचल प्रदेश में कि बदले की भावना से, प्रतिशोध की भावना से कुछ चीज़ें होती थी, बहुत ज़्यादा नहीं होती थी लेकिन फिर भी होती थी। हमने उन सारी चीज़ों पर रोकने की कोशिश की। Now here's some news in brief, viewers. Renowned author Salman Rushdie was taken off a ventilator and will be able to talk, as was confirmed by his agent. The person accused of shooting author Salman Rushdie at an event pled not guilty over the charges, and the 24-year-old from New Jersey has been charged with the attempted murder and assault after his attack on the author. The AIMIM state president demanded that the Bihar's new government have a deputy chief minister from the minority community, stating that the minority had the highest share in the new alliance and that the We at Republic TV have always said, forces first, nation first. Republic Media Network has been reporting from the frontiers of the Indian territory near the border with China, showing you how our forces are training to keep the Chinese at bay. Now, this is one of the reports, multiple such reports that we've been filing from across the country, be it at the Indo-Pak border or, for that matter, even
from Gujarat. All the borders that have been covered, to give you a sense of what's the security situation right now and how our security grid appears to be absolutely robust. It's 5:30 in the morning and a day in a soldier's life has just started. We are very close to the line of actual control here in Menchuka. We are reporting from a battalion of the Indian Army, where you can see the bravoes of the Indian Army, the garrisons of the LSE is starting off their day with the morning PT. This is a regular affair in the battalions, in the companies, in the units of the army. After this PT, they will go for the other daily exercises inside the camp, and as the day progresses, we will be closely following the bravoes of the Indian Army to bring you a picture from a day in their life. After the warm-up round, now we are at the circuit training area of the battalion, which is especially designed by this battalion for keeping in view the high altitude and for regular fitness of the jawans as well as the officers here. हमारे साथ यहाँ पर है सूबेदार हाजी खान साहब, जो कि IMA में भी ट्रेनर रह चुके हैं. हाजी खान जी, ये जो ट्रेनिंग है, ये सर्किट ट्रेनिंग एरिया जो आप लोगों ने बनाया है, ये खास तौर पे यहाँ पे डिजाइन किया गया है, हमें बताया गया. क्या थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से इस पूरे चीज को डिजाइन किया गया? सर एक्चुअली हम जिस वातावरण और जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हम चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे हुए जंगल है और नाले हैं. तो इस जगह हमारे को हमें पेट्रोलिंग करनी होती है, कोई जो ऑपरेशनल एक्टिविटी करनी होती है. तो इसमें क्या है साहब कि हमारे को बहुत हार्ड फिजिकल की ज़रूरत पड़ती है. तो हमारी यूनिट ने क्या है कि एक सर्किट ट्रेनिंग तैयार किया हुआ, जिसमें हम जवान को हर तरह का ट्रेनिंग दे करके और उसका फिजिकल स्टैंडर्ड अप करते हैं, ताकि जो ऑपरेशनल टास्क को पूरा करने में जवान को आसानी होती है. क्योंकि हमें कई बार क्या होता है कि बहुत ही कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है, जैसे कि कोई जंगल है, पहाड़ है, कई बार ऊंचे पहाड़ है जो कि 70 डिग्री से भी ज़्यादा ग्रेडियंट है. उन हालात में हमें गुजरना पड़ता है, साथ ही नालों से हैं. तो इस प्रकार से हम ट्रेनिंग दे करके जवान का जो फिजिकल स्टैंडर्ड अप करते हैं, ताकि वो किसी भी कंडीशन में अपने टास्क को पूरा कर सके. यहाँ पर खास तौर पे ये जो बकेट कैरी हो रहा है, पावर लिफ्ट हो रहा है, साथ ही साथ बेबी कैरी, सारे ऑब्स्टिकल्स यहाँ पर रखे गए हैं. तो ये आपके रेगुलर एक्टिविटीज़ में जो हर रोज़ आप लोग एक्सरसाइज करते हो, उसमें जवान्स का जो फिजिकल बेनिफिट्स होते हैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? हाँ सर, एक्चुअली हम लोग हमारा डेली मॉर्निंग पीटी होता है, और डेली मॉर्निंग पीटी में क्या है कि हम अलग अलग दिन अलग अलग ट्रेनिंग शेड्यूल बना के रखते हैं. जैसे कि एक दिन हमने एंडोरेंस पीटी किया, अगले दिन हमने बीपीटी किया, अगले दिन हमारा योगा हुआ, अगले दिन हमने 10 से 15 किलोमीटर का रोड मार्च करते हैं पूरे बैटल लोड के साथ. यहाँ पर खास तौर पे जो ट्रेनिंग के साथ साथ अभी जो ये ट्रेनिंग हो रहा है, सुबह हम लोगों ने देखा आप लोग वार्म अप रन के लिए निकले, क्रॉस कंट्री करते हैं. इससे और यहाँ के बाद अभी क्या करने के लिए जाएंगे आप लोग? क्या क्या एक्सरसाइज? सर जब मॉर्निंग पीटी में हम लोग हार्ड पीटी करते हैं, जिसमें पूरे शरीर के हर रगपट्टे को हम एक्सरसाइज देते हैं, जिससे क्या है कि जवान का अपर और लोअर बॉडी मजबूत होता है. इससे क्या है कि जवान में एक तो जोश, फुर्ती और मोरल अप रहता है. आफ्टर पीटी हम लोग सर 1 घंटे का ब्रेक होता है, जिसमें जवान अपना ब्रेकफास्ट करता है, नाना धोना करता है और सेकंड पीरियड के लिए तैयार होता है. जैसे कि आज हमारा सेकंड पीरियड है कॉम्बैट ट्रेनिंग का, जिसमें हमारा स्लेदरिंग है और अनआर्म्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग है सर. As you can see here, this battalion has designed this high circuit training area on its own, and it's one of its kind, keeping in view the altitude and also the challenges that are being faced, particularly while defending the LSE. Guarding the high altitude area along the LSE is full of challenges. In some places, if the soldiers who carry equipments and luggages more than 20 kgs need to climb down the mountains, in some places they need to climb up. We'd like to
know on the essence of these activities that they do every day in their day-to-day life. We have Major Avilas Kulkarni with us. Major Kulkarni, what is the essence basically if we talk about the rock climbing and rappelling along the LSE that you need to carry out on a regular basis? Being deployed in the hilly and treacherous regions of this region, it is imperative for all the soldiers to be especially trained in all the life skills. Over here, we train soldiers in various rock crafts, rock climbing, rappelling, river crossing and firing drills. As you see, this region particularly requires physical and mental strength. Therefore, each and every soldier trains here in all the possible life skills and therefore moves ahead in high altitude areas. So now we will be taking you to show how the soldiers face the challenges with a smile on their face every day as they move towards higher altitude locations situated in the LSE. Mega crackdown on terror in Uttar Pradesh. ATS arrests Jaish terrorist in Kanpur in ISIS plot. In an exclusive conversation with Republic, Jammu's ADG Mukesh Singh on terror threats ahead of Independence Day said that terrorist groups are in a bid of infiltration and to target security camps to avoid any act of terror in the Union territory. Anti-drones have been installed and the public have been briefed about the threats. Speaking about the recruitment rally for Indian Army Agniveers as per Agnipath scheme, Major General Ranjan Mahajan says in total 4 districts will be covered. Best candidates will be selected through transparent process. He further revealed about a separate women's rally which will be carried out after a few days. You're watching live and breaking other top stories from across the country after the sudden demise of India's big bull Rakesh Jhunjhunwala's final rites to be reportedly performed at 5:30 p.m. today in Mumbai's Malabar Hill. Jhunjhunwala was brought dead to Breach Candy Hospital. मैं जो भी आने वाली जनरेशन कोई भी स्पोर्ट्स की है, प्लीज आप मेहनत कीजिए और हम सब मिलके इंडिया की नाम, इंडिया की तिरंगा को हर टाइम ऊपर करते रहिए. मैं सिर्फ धूल, मिट्टी, टैंक का ऑयल आपके चेहरों पर देखना चाहता हूं और अपने हुनर को उस तलवार की धार की तरह और नुकीला और पैना करेंगे जो कि हमारे दुश्मनों के दिलों में चीरती हुई निकल जाएगी. क्लियर है? भारत माता की! You're watching Superfast 50. I'm Shivangi Shukla. Let's get started. The big bull of Indian markets, Rakesh Jhunjhunwala, is no more. Born in the year 1960, Jhunjhunwala passed away at the age of 62. He was brought dead this morning at Mumbai's Breach Candy Hospital at 6:45 a.m. Heading companies such as Hungama, Media and Aptech, the veteran stock market investor had recently inaugurated his low-budget airlines, often referred to as India's own Warren Buffett. He passed away at the age of 62 following health complications. As per the received inputs, Rakesh Jhunjhunwala was suffering with multiple health issues. The ace investor was declared dead at Mumbai's Breach Candy Hospital today morning. Following the demise of the ace investor of India's global history, PM Modi paid condolences to Rakesh Jhunjhunwala's family and admirers. PM, in expressing grief, said he was indomitable, full of life, witty and insightful. He has left behind an indelible contribution to the financial world.
Expressing grief over Rakesh Jhunjhunwala's demise, Union Minister of Civil Aviation said that he was a symbol of India's entrepreneurial spirit and will remain an inspiration for the youth of the country. राकेश जी एक भारत के एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट के एक प्रतीक थे, जो उन्होंने अपनी जिंदगी में हासिल किया, स्थापित किया। मैं मानता हूं कि कई हजारों लाखों युवाओं के लिए वे प्रेरणा स्रोत रहेंगे। Top political leaders from across the country expressing grief on the sudden demise of the legend of the last street, Rakesh Jhunjhunwala, today. Top leaders including Union Home Minister Amit Shah, Karnataka CM Bommai, Minister of Parliamentary Affairs Prahlad Joshi, among others, paid condolences to his family and admirers. Akasa Air, founded by Big Bull Rakesh Jhunjhunwala, shared its condolences on the death of its founder today. Taking to Twitter, the statement read, "We are deeply saddened by the untimely death of Rakesh Jhunjhunwala this morning." Further, Akasa Air said that they will honor Jhunjhunwala's legacy in the long run. Market expert Ajit Singh on sudden demise of Jhunjhunwala said that India has lost a visionary person. Speaking about the impact on India's business market, Singh also said that Jhunjhunwala encouraged new entrepreneurs and dreamt of giving low-cost airline to the country. Top businessman Suhail Seth remembered Rakesh Jhunjhunwala as a great human being. He further said in an exclusive conversation with Republic that he was a real Indian who's combined expertise with empathy. Rakesh, India has not only lost a great stockbroker, it has not only lost someone who understood the markets, it has lost someone who believed in India, who believed in Indianness, who believed in Bharatiyata, who recognized the potential of Indian companies, who invested not to make money, but to also make sure that those companies grew. And people like you and me grew with those companies if we were shareholders. Rakesh, to my mind, a lot of people see him as a person who was a great stock market expert, but he was actually a great human being. Ahead of India's 76th Independence Day celebrations, in Kendriya Vidyalaya, students were seen celebrating for the same. This student was seen raising tirangas and dancing on the beats of patriotic songs. On the eve of 76th Republic Day, the popular beating retreat ceremony was held by the Indian Jawans and their Pakistan Rangers counterparts at the Atari Wagah international border in Punjab. Crowds were heard chanting Vande Mataram slogans. As a part of the celebrations of Azadi Ka Amrit Mahotsav to commemorate the completion of the 75th year of independence, the 176th Battalion of BSF North Bengal Frontier celebrated Har Ghar Tiranga at Indo-Bangladesh border. पर्व को बड़ी शिद्दत से मना रहे हैं। इस दौरान हमारा सिक्योरिटी अरेंजमेंट 365x7x24 आवर्स का है। लगातार हम इंफॉर्मेशन पे पैनी नजर लगाए हुए हैं। A flag atop a 108 feet long pole was unfurled in Jammu and Kashmir's Baramulla. The flag was raised ahead of the Independence Day in Jammu and Kashmir's third largest city. At least 5,000 people gathered at Indore on the eve of the Independence Day to coordinate and form the Indian map. The Mumbai police organized a 10-kilometer marathon race of police personnel along with a bike and a vehicle rally at the Marine Drive in Mumbai. The event was flagged off by the state's Deputy CM Devendra Fadnavis, while Akshay Kumar was also present at that event. The Azadi Ka Amrit Mahotsav was celebrated as a cycle rally at the National Police Memorial in New Delhi's Chanakya-Puri, with Indian judoka and the Commonwealth Games silver medalist Tunika Mann present at the event as well. An NGO organized and run with the former soldiers to raise funds for the soldiers as well as their families in Bengaluru. A band of the armed forces was seen performing tunes at the event. UP CM Yogi Adityanath flagged off a bike rally as a part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav in the state's capital of Lucknow. Built in 1877, the Victoria Bridge in Mandi that connects two parts of the Himachal town was illuminated in the colors of the Indian flag.
Jammu and Kashmir's Lieutenant Governor Manoj Sinha flagged off the walkathon organised by the BSF in Srinagar as a part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav, as several events are organised across the country to commemorate the 75 years of the country's existence. In order to recall the suffering caused by the division of India, Bharatiya Janata Party organised a silent march across the city. Meanwhile, PM Modi paid tribute to all those who sacrificed their lives as a result of the division of India and Pakistan on Sunday. ये कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है, इसलिए 14 अगस्त ये पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है और कल भारत का स्वतंत्रता दिवस है। तो हमारे देश के उस समय के नेताओं ने जल्दबाजी में किसी तरह से हमको कुछ मिल जाए, भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया। 18 villages were evacuated after the wall of an under-construction dam in Madhya Pradesh's Dhar district was breached, which has now led to the seeping of water. According to sources, teams from Indian Army, the National Disaster Response Team and the State Disaster Response Force have been deployed to take stock of the situation. कल हमने बाईपास चैनल बना के पानी की निकासी प्रारंभ की थी, लेकिन जब तक हम पूरा पानी नहीं निकाल देते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। A Dalit miner was allegedly beaten severely, leading to his death over drinking water, Rajasthan, Jalore. He was allegedly beaten up for touching a water container at his school and was beaten by his teacher. कुछ समय पहले जो अध्यापक के द्वारा है वो छात्र के साथ में मारपीट की गई थी। इस प्रकरण का पुलिस के संज्ञान में आते ही त्वरित गति से इसको संज्ञान में लेते हुए प्रकरण दर्ज करवाया गया और मेरे द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। आज ही प्रकरण दर्ज हुआ है और मैं मौका देख के आया हूँ। एसपी साहब भी पधारे थे और इसमें है जो आरोपी जो शिक्षक है उसको दस्तयाब कर लिया गया है और उससे अनुसंधान किया जा रहा है। कोई मटकी वगैरह ऐसा कोई मैटर था? ये अनुसंधान का विषय। After Dalit minor boy was allegedly beaten to death by the private school director, reportedly for drinking water from the common filter in Rajasthan, Rajasthan's Minister Pratap Singh assured strict action against the culprit. ऐसे लोग जो गंदी मानसिकता के हैं वो बचेंगे नहीं। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और ये मानकर चलिए किसी भी टीचर को इस तरह से बदतमीजी करने का कोई हक नहीं है और यदि कोई टीचर कर रहा है तो सरकार राजस्थान में कानून व्यवस्था मेंटेन करने वाली सरकार है, गुड गवर्नेंस की सरकार, किसी को छोड़े नहीं। राजस्थान नंबर 1 है गुड गवर्नेंस में, कानून व्यवस्था। Speaking over the Jalore incident, BJP slammed the Rajasthan government and called it a state-sponsored atrocity against the scheduled caste community. एक सामाजिक बुराई है और ये बुराई आज़ादी से पहले से चल रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसके लिए लगातार संघर्ष किया, अनेक महापुरुषों ने संघर्ष किया, कानून बने, सख्त से सख्त कानून बने हुए हैं, लेकिन इस बुराई को समाज के सभी लोगों को मिलकर इसके विरुद्ध लड़ना चाहिए। कार्यपालिका, न्यायपालिका सभी सक्षम है सजा देने के लिए, मन परिवर्तन करने के लिए। मुझे लगता है एक बहुत सामाजिक कर्तव्य निभाने की जरूरत है। Following the shocking demise of former BJP MLC and Shiv Sangram Party chief Vinayak Mete, Maharashtra CM Eknath Shinde expressed grief over Mete's death and called it an unfortunate incident. Further, he also said that the state government stands with the family of Vinayak Mete. Former BJP MLC of Maharashtra, Vinayak Mete, passed away after his car met with a fatal accident near Mumbai. The accident took place at the Mumbai-Pune Expressway, following which he immediately succumbed to his injuries. In a mega crackdown on the terror in UP, ATS arrested Jaish terrorist in Kanpur ISIS plot. The accused came into light from investigation of the case and interrogation. Mamta's main man, Anubrato Mondal, was brought to CBI headquarters in Kolkata after medical checkup at the command hospital. Mondal was arrested in cattle smuggling case and will remain in CBI custody till August 20th. Reacting on Anubrato Mondal's case, BJP leader Loket Chatterjee said that if Mondal was right,
he should not be afraid. BJP leader further said that the arrested leader is afraid of ED's investigation. तो इसमें तो डरना नहीं चाहिए. इसका मतलब है ये लोग डर रहा है कि इसमें पकड़ पाएंगे, अगर ईडी अटैच हो जाएंगे तो ईडी प्रॉपर्टी को लेके बहुत सारा क्वेश्चन पूछेंगे, गिरफ्तार भी हो सकता है, इसलिए ये सब कर रहा है. लेकिन इसमें कुछ लाभ नहीं होगा, क्योंकि जो लोग अन्याय किया है अन्याय के साथ विचार होगा. डेफिनेटली जो इलीगल जो मंत्री का नाम आया, ऐसा तो कुछ आलतू फालतू नहीं दिया है ना. जो 19 मंत्री जो लोग को नाम दिया है, इसमें कुछ गड़बड़ है उनका प्रॉपर्टी का, इसलिए बोले हैं हाई कोर्ट ने, इसलिए बोला है कि ईडी को जोड़े, इसलिए ये सब हुआ है. आप लोग देखिए, जो बंगाल में बहुत सारा लोग जो जनता को पैसा लूट के ये लोग प्रॉपर्टी बनाए हैं. Heavy rains continue to lash Kerala's Kannur district. Due to the strong winds and heavy rains, roofs of several houses were blown off. Days ahead of the Bihar cabinet expansion, Assaduddin says AIMIM has demanded that Muslim leaders should be made deputy CM in the Mahagathbandhan government. Noting that the ruling alliance has a maximum vote share of the minority community, lone AIMIM MLA Akhtarul Imam demanded that a minority deputy CM be appointed to Nitish Kumar's cabinet. A tragic incident, a 45-year-old man died of electrocutions while putting up a tricolour on a shop in Madhya Pradesh ahead of the country's Independence Day. The man, identified as Mohan Patel, died while he was putting up the national flag on an iron rod which came in contact with a power supply line, as per the police officials. In a stern response to Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav's controversial remark on Har Ghar Tiranga campaign, UP Deputy CM Keshav Prasad Maurya criticized the statements of the SP chief, stating that it is an insult to the country and also to the state of UP. देखिए, श्री अखिलेश यादव जी के लगातार आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर जो बयान आ रहे हैं, वह देशभक्तों का अपमान कर रहे हैं. जिन लोगों ने देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया है, ऐसे बलिदानियों का अपमान कर रहे हैं और पूरे देश के अंदर यूपी को बदनाम भी कर रहे हैं. Maharashtra CM Eknath Shinde yet again sought to justify his move of creating a rebel group by drawing attention to the fact that the people of the state had voted for a Shiv Sena BJP government. He said that he should have taken the step 2.5 years ago, adding that this move was a corrective measure. In an exclusive conversation with Republic, Jammu's ADG Mukesh Singh on terror threats ahead of Independence Day said the terrorist groups are in bid of infiltration and to target security camps. To avoid any act of terrorism in the UT and Union territories, anti-drones have been installed and public has been briefed about the threat. जो ये दिखाता है कि आतंकी संगठन जो है लगातार प्रयास में जुड़े हैं, चाहे वो इन्फिल्ट्रेशन के ज़रिए हो, चाहे उनकी इन्फिल्ट्रेशन के अटैम्प्ट्स हों, चाहे वो किसी को टारगेट करना हो, चाहे कि सिक्योरिटी फोर्सेस कैंप्स को टारगेट करना हो. इस तरह के इनपुट्स आ रहे हैं और हम पूरी तरह से तैयार हैं. हमारे पास सफिशिएंट फोर्स अवेलेबल है. Speaking about the recruitment rally for Indian Army Agniveers, as per Agnipath scheme, Major General Ranjan Mahajan said that a total of 4 districts will be covered. Best candidates will be selected through transparent process. He further revealed about a separate women rally which will be carried out after some days. आज हमारा तीसरा दिन है और इस रैली के तहत हम 4 जिलों को कवर कर रहे हैं, जिसमें हिसार, जींद, फतेहाबाद और सरसा है. और आज का दिन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के टाइम पे इस रैली को कंडक्ट कर रहे हैं. After the Punjab governor gave his assent to a bill limiting multiple pensions to the former members of Legislative Assembly, MLAs, the Aam Aadmi Party government has issued a notification in this regard, with CM Bhagwant Mann saying it will save 100 rupee crores in the next 5 years. Congress leader DK Shivakumar sparks a row on Tipu Sultan's poster. Addressing the media, Shivakumar said that miscreants have torn the poster of a national fighter, Tipu Sultan. He further said that despite celebrating this freedom fighter all across the nation, such acts are happening, which is unacceptable. Create law and order problem
Some miscreants have done it. I don't want to speak much on this. I am requesting everyone to be peace and calm. Let us celebrate this Independence Day, then we'll look into it later. According to the Union Health Ministry, India has reported over 14,000 new COVID positive cases since the last 24 hours, taking the overall positive cases in India to over 4.4 crores. This has been the latest dip in the number of cases, while the positivity rate remains to be at around 98.28%. A fire blazed through a church in a densely populated neighborhood of Cairo. People there who were worshipping, in fact, from there, 41 people were killed and injuring around 14 people. According to the sources, the cause of the blaze, which produced huge amounts of smoke, was not immediately known. An initial investigation pointed to an electrical short circuit, according to a police statement. Sources further added that it was one of the worst fire tragedies in Egypt in recent years. 7 people were killed in a torrent of water that came rushing down a river in southwestern China. According to sources, several people were washed away, including some children, when the water flow in the lower reaches of the river suddenly increased in just 10 to 20 seconds. Renowned author Salman Rushdie was taken off a ventilator and will be able to talk, as was confirmed by his agent. The person accused of shooting author Salman Rushdie at an event pled not guilty over the charges. The 24-year-old from New Jersey has been charged with attempted murder and assault after his attack on the author. Thousands of supporters of former Pakistan PM Imran Khan's Tehreek-e-Insaf party took part at a rally in Lahore on the 75th anniversary of Pakistan's independence from British rule. Khan said that a fight for real freedom will continue until the country gets rid of imported governments and elections are held. Till then, they will struggle together. Hundreds of Nicaraguans attended a mosque under heavy police presence after the government prohibited religious processions in the capital amid tensions with the Roman Catholic Church. This comes after church leaders in an announcement said that the national police had banned the planned procession for internal security. A gunman opened fire at a bus near Jerusalem's Old City. The incident wounded 8 Israelis in a suspected Palestinian attack that came a week after violence flared up between Israel and militants in Gaza. Hubert Rakesh, who booked his place in the Montreal Masters final, recovering from losing the opening set to beat Casper Ruud. He will now face either Pablo Carreño Busta or Dan Evans in the final. A goal from forward Timo Werner on his return to Leipzig was not enough as his side drew 2-2 earlier this week following a 2-year spell at Chelsea. Real Madrid prepared for the first round of the La Liga title defense with a training session. Real last lost to Almeria in 2008, winning 8 of the 10 games contested since then and have scored a combined 24 goals in the last 5 meetings with the team. The Amity BBA has been ranked India's #1 BBA in the recently released Times of India B School 2022 rankings, a testimony to Amity BBA's globally benchmarked standards in education. These kind of trainings are very important because this entire region is more of the mountainous rather than plains. So the Jawan coming to the Kargil Battle School has to go all kind of training. हमारे सेना में लड़ाई लड़ने की इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास तथा दुश्मन को निष्क्रिय करने का ताकत है। You have to be physically fit if you have to be in this kind of weather and in this kind of region.
And now let's get you some news from across the country in brief. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has received death threats in a letter addressed to Devendra Tiwari, National President of the Bharatiya Kisan Manch. One Mohammad Ajmal said that the regime of Chief Minister Adityanath, people like Tiwari have been too indulgent in Gauraksha and Gaushalas and warned them to mend their ways or face dire repercussions. President Draupadi Murmu will deliver her. मैं सिर्फ धूल, मिट्टी, टैंक का ऑयल आपके चेहरों पर देखना चाहता हूं और अपने हुनर को उस तलवार की धार की तरह और नुकीला और पैना करेंगे जो कि हमारे दुश्मनों के दिलों में चीरती हुई निकल जाएगी। क्लियर है? भारत माता की! Viewers, we continue to be live and breaking on Republic TV. And we at Republic have always said forces first, nation first. Republic Media Network is reporting from the frontiers of the Indian territory near the border with China, showing you how our forces are training to keep the Chinese at bay. We are at the base of a rock face now, and we are bringing you these visuals from a location very close to the LSE in Arunachal Pradesh, and we are just trying to explain you the silences that the soldiers of the Indian Army go through while patrolling the forward areas, particularly given that there are some rock face and mountains which suddenly goes up to around 3,000 feet or 4,000 feet. If you see on this side also, you can see this mountains which are very high in altitude. The mountain that you can see over there is at least 3,000 feet from the base where we are standing. हमारे साथ हवलदार शैतान सिंह जी है जो यहाँ पर जो रॉक फेस पर कैसे क्लाइंब करते हैं वो थोड़ा हमें एक्सप्लेन करेंगे। कैसी तैयारी रहती है, क्योंकि आप लोग जब निकलते हो तो ऐसे रॉक फेस आ जाते हैं, कई कई पे बड़े बड़े पहाड़ी आ जाते हैं। जब दुर्गम इलाके में जब हमारी पेट्रोल एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है तो हमारे को रॉक क्लाइंबिंग करके ट्रेनिंग करने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे को समय बहुत ज़्यादा व्यर्थ हो जाता है। तो इसलिए हम ट्रेनिंग के दौरान रॉक क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें 2 जवान अपने कैराबिनर, डिसेंडर सबका इस्तेमाल करते हुए कम से कम समय में अपने टास्क को पूरा करता है। आप लोग तो जब जाते हो तो वेपन्स के साथ साथ आप लोग रैकसैक भी लेके जाते हो, बहुत वजन रहता है, तकरीबन 25 से 30 किलोग्राम का वजन साथ लेके क्या क्या लेके जाते हैं आप लोग? सर, इसमें अपना हर जवान का अपना पर्सनल वेपन होता है और पर्सनल अम्युनिशन तथा इक्विपमेंट प्रॉपर होता है। इसके अलावा अपने सेल्फ डिफेंस 72 आवर्स के लिए सेल्फ डिफेंस होता है। इसमें अपने क्लोथिंग वगैरह सब कुछ, टेंट वगैरह भी रखते हैं, जिसके हमें क्या 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी रुकने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये अपना हर आइटम साथ लेके चलते हैं, जिससे कि हमारा वो सेल्फ डिफेंस रह सकते हैं। सर, तो आप लोग जब निकलते हो तो 3 दिन का 7 दिन का सामान आप लोग पूरा तैनात होकर के निकलते हैं? सर, हम जब निकलने से पहले हमें इस बार एक ट्रेनिंग करते हैं, पहले रॉक क्लाइंबिंग और एप्सिलिंग दोनों की ट्रेनिंग करने के बाद हमारा सारा सामान साजो सामान लेकर फिर हम मूव करते हैं। सर, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त इसीलिए कहा जाता है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हज़ारों मुश्किलों का सामना करते हुए हमारे देश के वीर जवान LSE में हमारे लिए तैनात रहते हैं, ताकि हम अपने आज़ादी का जश्न मना सके। Right now we are in a firing range in a forward area along the LSE in Mechuka sector, and as you can see here, this firing range is equipped with all that is required in order to do regular practices. We'll talk on how the firing drill is being conducted. यहाँ पर फायरिंग की जो ट्रेनिंग होती है, आप कैसी चलती है यहाँ पे? जिस प्रकार से एक जवान अगर लड़ाई के मैदान में उतरता है, किसी कार की जगह उसको जाना होता है, तो उसको हम यहाँ पे पहले यहाँ पे ट्रेन करते हैं। तो उसके बाद में हर जवान को जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं, तो उसके हर हथियार को उसको वो एक मुद्दा हासिल करने के लिए
अपना मुद्दा हासिल करने के लिए, तो अपने हथियारों पर हमला करने के लिए जवान को हम प्रैक्टिस देते हैं डे एंड नाइट। जिस प्रकार आप सामने देख पा रहे हैं, यहाँ पर 2 प्रकार की रेंज आप देख पा रहे हैं। वो जब आपके राइट में है 30 मीटर, और जिस पे अभी फायर कंटिन्यू चल रहा है ये 100 मीटर। जो 100 मीटर की रेंज है, जिस पे आप वेपन देख पा रहे हैं अभी, ये है 5.56 इंच राइफल, जो कि 100 से लेकर के 400 मीटर तक इसको हम रेंज पे फायर करते हैं। यहाँ पर आप लोग क्या क्या वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पे सर हम जैसे सिक्योबी बैटल्स है, क्लोज क्वार्टर बैटल्स है, उसके अंदर 9mm पिस्टल, 9mm CMG कार्बन मशीन गन्स होती हैं। उसके बाद में जो मेरा जो AK-47 है, AK-50 है, उसका इस्तेमाल हम करते हैं। उसके बाद में जब हमारा टारगेट मोस्ट मतलब 100 मीटर से अब होता है, उस समय हम इंसास राइफल, लाइट मशीन गन्स और मेरे पास जो आपको बताया सिक्योर वेपन AK-47 का इस्तेमाल भी हम यहाँ पे करते हैं। यहाँ पर यदि देखा जाए तो आपने टारगेट लगा के रखा हुआ है, यहाँ पर टारगेट प्रैक्टिस यहाँ पर होती है। यह पहाड़ी इलाका है, जंगली इलाका है, दुश्मन कभी भी किसी भी वक्त किसी भी तरफ से सर, बिल्कुल आपने सही बोला। यहाँ पे हम अपनी जो लड़ाई लड़ते हैं इस प्रकार से लड़ते हैं, जो डिफेंसिव बोलते हैं, जिस प्रकार खुद को छुपाना है और जो सामने वाले टारगेट को बर्बाद करना है। तो जिस प्रकार से अभी मेरे सामने आप इस साइड में देखिए, वहाँ पे आपको एक मचान दिखाई देगा, जहाँ पे ऑलरेडी एक वहाँ पे सेंट्री मेरा बैठा हुआ है। अगर मेरा कोई यहाँ से नीचे से कोई दुश्मन जाएगा, उसको वो अपने फायर से नीचे की तरफ देखिए, नीचे खड़ा होकर के नीचे की तरफ उसको एंगेज कर रहा है, तो नीचे से गुजरते हो दुश्मन को तो वह मार गिराएगा। किसी तरह से निकलने वाले दुश्मन को, किसी भी साइड से निकलने वाले दुश्मन को नीचे से अगर गुजर रहा है उसको एंगेज वो कर लेगा। कवर फायरिंग। यस सर। जिस प्रकार से अभी मेरा यहाँ पे मेरा ट्रूस बैठा है और वहाँ से कोई निकल रहा है, उसको मैंने एंगेज करना है, तो उसको एंगेज करने के लिए जब तो मेरे को कवर फायर देगा, तो ये मेरे यहाँ पे डबल काम कर रहा है वहाँ पे अभी। Viewers, much more coming up on the other side this Sunday night. India marks Partition Horrors Remembrance Day, but Congress continues to politicize. Questions PM Modi now. And Baghel court's controversy on the eve of Independence Day equates Savarkar to Jinnah. The Amity BBA has been ranked India's #1 BBA in the recently released Times of India B School 2022 rankings, a testimony to Amity BBA's globally benchmarked standards in education. NCP leaders Anil Deshmukh and Nawab Malik and Shiv Sena leader Sanjay Raut, who have been arrested in money laundering cases by the Enforcement Directorate, are now lodged in Arthur Road Jail in 3 different barracks. However, Malik, who was arrested in February, is currently admitted into a hospital in Kurla for treatment. Shiv Sangram party leader Vinayak Mehte killed in road accident at Khopli Tunnel in Maharashtra's Raigarh. Maharashtra's Chief Minister Eknath Shinde speaks on his demise, stating he had contributed significantly towards the Maratha Andolan and was a good leader. A Dalit child allegedly beaten severely, causing his death over drinking water in Rajasthan's Jalore. He was allegedly beaten up for touching a water container at his school and was beaten by his teacher. Top headlines at 8 p.m. viewers. India marks Partition Horrors Remembrance Day, but Congress politics continue. Questions PM Modi now. Baghel courts a controversy on the eve of Independence Day equates Savarkar to Jinnah. Fadnavis gets additional charge in Maharashtra government, handed home and finance ministries.
Mega crackdown on terror in UP. ATS arrests Jaish terrorist in Kanpur in ISIS plot. Civic apathy kills 45-year-old in Madhya Pradesh's Khargone while setting up Tiranga. Veteran investor and the big bull of the last trade, Rakesh Jhunjhunwala, passes away at the age of 62 in Mumbai. Viewers, Bhupesh Baghel has made a controversial comment comparing Savarkar to Jinnah. He says Savarkar had proposed the two-nation theory. Jinnah supported that proposal. They tried their best not to leave the British country, and that is a shocking statement coming in from Baghel. Let's listen in to what Bhupesh Baghel has said. उन्होंने अध्यक्षता किया उस समय उन्होंने कहा कि दो राष्ट्र का उन्होंने स्वीकार किया और वहीं मोहम्मद जिन्ना ने उसे 1937 में उसको स्वीकार किया। तो दो राष्ट्र के जो सिद्धांत है उसको सावरकर ने प्रस्तावित किया और उसका समर्थन जिन्ना ने किया। तो विभाजनकारी तो ये लोग हैं। देश की आज़ादी में उनकी भूमिका क्या रही? 1925 में बन गया था ये आरएसएस विश्व हिंदू परिषद। इनके तमाम नेताओं को समय बयान देखिए। 1942 में वो कहते हैं कि इसमें शामिल नहीं होना है, कैसे दबाया जाए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी वायसराय को चिट्ठी लिखते हैं कि ये तो अंग्रेज जाए ही मत, और अभी भी अंग्रेजों की आलोचना नहीं करते, ये गांधी की आलोचना करते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ एक शब्द भी ये बयान दिए हो तो बताइए। विभाजन के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है। इसलिए 14 अगस्त ये पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है और कल भारत का स्वतंत्रता दिवस है। तो हमारे देश के उस समय के नेताओं ने जल्दबाजी में किसी तरह से हमको कुछ मिल जाए, भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया और उस विभाजन का परिणाम ये हुआ कि 5 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, लाखों महिलाओं बहनों के साथ बलात्कार हुआ, 2 करोड़ से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए, या तो भारत से उधर गए या उधर से इधर आए। और हमारा जो पूर्वी इलाका है बंगाल, उसका विभाजन हो गया। जो पाकिस्तान जो पंजाब का इलाका है उसका विभाजन हो गया। ये विभाजन कृत्रिम विभाजन था, उसी का परिणाम था कि 1971 में पाकिस्तान फिर टूट गया और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। और देखिए अंग्रेज़ों की ये साजिश थी कि जाते जाते उन्होंने दुनिया के अनेक देशों को बांट दिया। कोरिया का विभाजन हो गया, उसमें केवल ब्रिटिश नहीं थे, अमेरिकन, फ्रेंच कई लोग थे। वियतनाम का विभाजन हो गया। तो दुनिया के बहुत सारे देशों का विभाजन हो गया। फिलिस्तीन का विभाजन हो गया। तो ये जो कॉलोनियल पावर्स थे, चाहे वो फ्रेंच हो, जर्मन हो, अमेरिका हो, जापान हो, ब्रिटिश हो, इन लोगों ने आज़ादी देने के साथ साथ बंटवारे का बीज बो दिया। और देखिए इसका तो बीजारोपण प्रथम 1906 में तब हुआ जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, और 1909 के अंदर मुस्लिम लीग की मांग को तत्कालीन सरकार ने स्वीकार कर लिया कि मुसलमानों के पृथक निर्वाचन का अधिकार होगा, यानी हिंदू हिंदू को वोट करेगा, मुसलमान मुसलमान को वोट करेगा। तो इस देश के विभाजन का बीजारोपण 1909 में तब हो गया जब पृथक निर्वाचन के अधिकार को स्वीकार कर लिया गया। Not only BJP, Assam government has also observed Vibhajan Vibhishika Smriti Divas. So today we have taken a renewed pledge that will not allow India to be again affected by any secessionist movement. Will not India again to witness that kind of bloodbath which we have seen during the days of partition. Today we have taken a resolve to make non-violence a mantra of our life. Another controversy quoted by the Congress party, this time ahead of the Independence Day, when Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel essentially trying to equate Veer Savarkar with Mohammad Jinnah.
In fact, now the BJP has hit out saying that this is nothing but pure insult. We've got multiple reactions that are now coming in on this. Just a quick recap of what we know so far. The comment that Bhupesh Baghel has essentially made, and I quote, he says, Savarkar had proposed the two-nation theory. Jinnah supported that proposal. They tried their best not to leave the British country. That is what Bhupesh Baghel had to say. Once again, the Bharatiya Janata Party is essentially saying that the Congress has been trying to invent their own history and saying that that's their own narration of the history which needs to be perhaps changed. We'll try and also get in more details right now and also get reactions. We've seen that today there have been two such controversies that have been quoted by the Congress party. A short while back also, senior Congress leader Jairam Ramesh has also put out another tweet, this time targeting Prime Minister Modi when it comes to the Partition Remembrance Day, Horrors Remembrance Day rather. And many would say that what is wrong to remind the people of the horror that many had to witness because of the partition. The Congress party once again saying that it is Prime Minister Modi who should essentially be blamed for remembering the horrors of the partition. Coming back to what Chhattisgarh Chief Minister had to say, he says that Savarkar is the one who had sown the seed of partition. We're getting in some more reactions that are coming in. Let's listen. अध्यक्षता किया उस समय उन्होंने कहा कि दो राष्ट्र का उन्होंने स्वीकार किया और वहीं मोहम्मद जिन्ना ने 1937 में उसको स्वीकार किया। तो दो राष्ट्र के जो सिद्धांत है उसको सावरकर ने प्रस्तावित किया और उसका समर्थन जिन्ना ने किया। तो विभाजनकारी तो ये लोग हैं। देश की आज़ादी में उनकी भूमिका क्या रही? 1925 में बन गया था ये आरएसएस विश्व हिंदू परिषद। इनके तमाम नेताओं को समय बयान देखिए। 1942 में वो कहते हैं कि इसमें शामिल नहीं होना है, कैसे दबाया जाए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी वायसराय की चिट्ठी लिखते हैं कि ये तो अंग्रेज जाए ही मत, और अभी भी अंग्रेजों की आलोचना नहीं करते, ये गांधी की आलोचना करते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ एक शब्द। इस विभाजन के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है। इसलिए 14 अगस्त ये पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है और कल भारत का स्वतंत्रता दिवस है। तो हमारे देश के उस समय के नेताओं ने जल्दबाजी में किसी तरह से हमको कुछ मिल जाए, भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया और उस विभाजन का परिणाम ये हुआ कि 5 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, लाखों महिलाओं बहनों के साथ बलात्कार हुआ, 2 करोड़ से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए, तो भारत से उधर गए या उधर से इधर आए। और हमारा जो पूर्वी इलाका है बंगाल, उसका विभाजन हो गया। जो पाकिस्तान जो पंजाब का इलाका है उसका विभाजन हो गया। ये विभाजन कृत्रिम विभाजन था, उसी का परिणाम था कि 1971 में पाकिस्तान फिर टूट गया और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। और देखिए अंग्रेज़ों की ये साजिश थी कि जाते जाते उन्होंने दुनिया के अनेक देशों को बांट दिया। कोरिया का विभाजन हो गया, उसमें केवल ब्रिटिश नहीं थे, अमेरिकन, फ्रेंच कई लोग थे। वियतनाम का विभाजन हो गया। तो दुनिया के बहुत सारे देशों का विभाजन हो गया। फिलिस्तीन का विभाजन हो गया। तो ये जो कॉलोनियल पावर्स थे, चाहे वो फ्रेंच हो, जर्मन हो, अमेरिका हो, जापान हो, ब्रिटिश हो, इन लोगों ने आज़ादी देने के साथ साथ बंटवारे का बीज बो दिया। और देखिए इसका तो बीजारोपण प्रथम 1906 में तब हुआ जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और 1909 के अंदर मुस्लिम लीग की मांग को तत्कालीन सरकार ने स्वीकार कर लिया कि मुसलमानों के पृथक निर्वाचन का अधिकार होगा, यानी हिंदू हिंदू को वोट करेगा, मुसलमान मुसलमान को वोट करेगा। इस देश के विभाजन का बीजारोपण 1909 में तब हो गया जब पृथक निर्वाचन के अधिकार को स्वीकार कर लिया गया। बहुjan Samaj Party Chief Mayawati demanded President's rule in Rajasthan following the death of a Dalit boy who was allegedly beaten up by his teacher for touching a water pot. 9-year-old Indra Kumar Meghwal, who was studying
at a private school in Jalore district was allegedly beaten up on the 20th of July, succumbed to his injuries at a hospital in Ahmedabad. National General Secretary of Bharatiya Janata Party, Tarun Chugh, wrote a letter to National Commission for Scheduled Castes Chairman Vijay Sampla, asking for strict action against the teacher accused of killing a Dalit student in Jalore. Sidhu Moosewala's father spoke about how his son's murder was the result of other musicians not happy with his success and that the Punjab music industry was full of gangsters. Sidhu's father Badal Balkar Singh went on to claim that he would reveal the names of those involved in the murder in the coming days. As many as 347 police personnel were awarded the Police Medal for Gallantry ahead of the celebration of the 76th Independence Day on Monday. Jammu and Kashmir Police, led by DGP Dilbag Singh, has been awarded the maximum number of medals, 108 among all the states and union territories. SP of Handwara and Jammu and Kashmir Kada Shima Nabi got the Chief of Armed Staff Commendation Medal. Himachal Pradesh's Chief Minister Jairam Thakur attended the felicitation program at the Himachal Pradesh University. The Chief Minister spoke about the progress the state had made in facilities as was not available before. Investor and billionaire Rakesh Jhunjhunwala breathed his last at 62. He spoke to Editor-in-Chief Arnab Goswami in a special edition of Nation Wants to Know back in 2021, where he put forth his forecast on the growth prospects of the Indian economy. Listen. Rakesh, how important in your view? I'm only looking at macro perspective. What I love the most about your comments is a futuristic perspective. So let me pick up one prophecy that you have made and then link it to our present. It was 2 months ago, since we just spoke about China a while back. It was 2 months ago you said, and I quote, "You may call me a fool, you may call me anything, I may not live to see it, but I can tell you one thing, India will overtake China in the next 25 years. So this was, first question was, what makes you so certain? What is the tell? And second question, if you can also answer that, please, how important is the present political dispensation, the Modi government, the stability we have to that? I don't want to discuss politics so much now. Let's look at the economic realities. So see, what I say this statement, well, I've seen one thing, that when the forces of growth will unleash themselves, we are underestimating the extent to which they will go. I've learned in the stock market, that the highs are always higher than you ever dreamt. The lows are always lower than what you ever feared. So I think in my perception, when these forces of growth, when reform takes place, it comes together and the forces of growth are unleashed in this country, we are underestimating the kind of growth it will bring in this country. I'm afraid to say it, but I think we could grow more than 10% for decades, for at least 2 decades, just like China did. So I see no reason why we will at least not be able to overtake or reach China's per capita GDP. Taking it further from there, we've seen how dynamic the global order can be, especially during COVID. So those who are considered the big players are fast changing, new players are coming in. What is the new global order that we should be preparing ourselves for? China is going to be a big part of the global economic order, and we are also going to be a big part of the global economic order. I think United States influence and power will always remain. I don't know about Europe. And the Soviet Union population is declining. Even in Europe, population is declining. So I think Europe, Japan, Russia may not be as important, but America, China, India are going to be America already is. I think China and India are going to be big players on the world's economic stage and consequently on the political stage.
Can India be a superpower by 2030? Say 9 to 10 years from now? I know, I will give that at least 1.5 to 2 decades. Real superpower. And when you say superpower, what are the indices that you look at for a country to achieve that position? India's political importance, India's contribution to the world economy. I think these are the two main, India's contribution to the world economy, and consequently, remember one thing, that our power flows from the economy. The larger the economy, the greater its importance. I think India undoubtedly will be among the world's top 3 economies. Not on PPP basis, but on actual basis. Tributes have been pouring in from across the country for India's big bull Rakesh Jhunjhunwala, who passed away after suffering a cardiac arrest. Here are some of the tributes from across the country. राकेश जी एक भारत के एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट के एक प्रतीक थे, जो उन्होंने अपनी जिंदगी में हासिल किया, स्थापित किया। मैं मानता हूं कि कई हजारों लाखों युवाओं के लिए वे प्रेरणा स्रोत रहेंगे। खास करके मेरे क्षेत्र के साथ नागर विमानन क्षेत्र में अकासा एक नई एयरलाइन की शुरुआत हमने अभी कुछ दिन पहले ही 7 तारीख को हमने साथ में की थी। मेरा अनुमान नहीं था कि इतनी विषम परिस्थिति से वे गुजर रहे थे, कि परिवार को मेरे दिल की गहराइयों के साथ से श्रद्धांजलि। I think in Rakesh, India has not only lost a great stockbroker, it has not only lost someone who understood the markets, it has lost someone who believed in India, who believed in Indianness, who believed in Bharatiyata, who recognized the potential of Indian companies, who invested not to make money, but to also make sure that those companies grew. And people like you and me grew with those companies if we were shareholders. Rakesh, to my mind, a lot of people see him as a person who was a great stock market expert, but he was actually a great human being. राकेश झुंझुनवाला जी के जाने से वो एकदम अकस्मात बहुत बड़ा वैक्यूम कैपिटल मार्केट में हो गया, क्योंकि वो कैपिटल मार्केट के बुल पुलर थे, जिसको हम बोलते हैं एस इन्वेस्टर। उसके अलावा एक विजनरी हमारे कंट्री ने खो दिया है, जिसको देख के बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, बहुत सारे लोग जो सोचते थे कि रिच बनना एक बहुत ही कुछ खास प्रिविलेजेस लोगों का काम है। झुंझुनवाला जी 5,000 रुपये से के इन्वेस्टमेंट से शुरू करके वो $5.5 बिलियन का उनका एस्टीमेट था, 36 रिचेस्ट मैन थे इंडिया के। तो उन्होंने पाथ दिखाया लोगों को कि कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। Getting in now images from Begpura in South Kashmir, where the father of the terrorist Riaz Naiko is seen hoisting the flag at his residence. Remember, what we are essentially witnessing is that in many parts of Jammu and Kashmir right now, the Har Ghar Tiranga has gained momentum. But what's very important to point out here is that this picture that you see, ladies and gentlemen, is the picture of the father of terrorist Riaz Naiko. He's hosting the flag at his residence in Begpura in South Kashmir. Let me also go across to my colleague Zeenat, who's joining us on this broadcast. Zeenat, significant image of Riaz Naiko's father now hoisting the flag. Are we to expect more such images now coming in? Because we've also seen, if I'm not wrong, there have been other pictures also coming in of family members of terrorists who are now hoisting the flag. What sort of a message does it go across? See, Shravan, we need to see that this is Naya Kashmir, where even the terrorist families are holding and hoisting strike. This is an image of the Begpura of South Kashmir, where Riaz Naiko's father is seen at hoisting tricolor at his residence in Begpura. We talk about the Riaz Naiko. He was a terrorist and was working with the
Hizbul Mujahideen, rather was a commander. He was a 35-year-old man who got killed in 2020 in March. In May, I remember he was killed in May 2020, and he was involved in several killings, but he was backed by the Pakistan outfit, and since that he was working for them as his chief of its operations in the valley with additional task of regrouping its ranks. But today we are seeing the family of Riaz Naiko holding the tricolor in the same South Kashmir, which earlier was known as a terror belt, because majority of the operation, even we talk about even today, are carried by J&K police along with security forces in South Kashmir. If we talk about Avantipora, Shopian, Kulgam or other districts like Anantnag. But we are seeing another change now in this that is surfacing in South Kashmir, whether we see the terrorist father hoisting tricolor or we see in the Shopian where the school kids are holding the tricolors, the rallies, the Tiranga rallies are being organized in South Kashmir, where it was difficult even to say that you are patriotic, you are Indian, or you are holding a tricolor, because tomorrow morning you know that terrorists will kill you, or they will try to attack your family. But we are seeing definitely a change in the South Kashmir, where now every individual is holding a tricolor and is becoming a part of Prime Minister Modi's Har Ghar Tiranga campaign. Well, thank you very much, Zenith, for getting us the latest. As Zenith has been pointing out, we are talking about such images coming in from what was once considered to be the hotbed of terrorism, that is South Kashmir. And let's not forget Riaz Naiko, who's behind several killings in Kashmir. His father is now hoisting the national flag. The UK-based author Salman Rushdie, who was put on the ventilator after being stabbed in the event in New York, has been taken off the ventilator. According to Rushdie's agent, the author has been taken off a ventilator and is able to talk now. Meanwhile, the man accused of carrying out stabbing attack has entered a not guilty plea in a New York court on charges of attempted murder and assault. US President Joe Biden expressed shock over the attack on Salman Rushdie. He further expressed his gratitude to the first responders and the courageous people who acted quickly to help Rushdie when he was attacked. Notably, following the attack, Rushdie was airlifted to the hospital and underwent surgery. He remained hospitalized after suffering injuries in the stabbing attack. Agency report, Republic TV. On the other side, mega crackdown on terror in Uttar Pradesh. ATS arrest Jaish terrorist in Kanpur in the ISIS plot. In an exclusive conversation with Republic, Jammu's ADG Mukesh Singh on terror threats ahead of Independence Day said that terrorist groups are in a bid of infiltration and to target security camps to avoid any act of terror in the Union territory. Anti-drones have been installed and the public have been briefed about the threats. Speaking about the recruitment rally for Indian Army Agniveers, as per Agnipath scheme, Major General Ranjan Mahajan says in total 4 districts will be covered. Best candidates will be selected through transparent process. He further revealed about a separate women's rally, which will be carried out after a few days. You're watching live and breaking other top stories from across the country. After the sudden demise of India's big bull, Rakesh Jhunjhunwala's final rites to be reportedly performed at 5:30 p.m. today in Mumbai's Malabar Hill. Jhunjhunwala was brought dead to Breach Candy Hospital at around 6:45 a.m. this morning.
Following the demise of the ace investor of India's global history, Prime Minister Narendra Modi paid condolences to Rakesh Jhunjhunwala. Personnel of the Border Security Force and the Pakistan Rangers were seen exchanging gifts on the occasion of Pakistan's Independence Day. The ceremony is performed annually as the two countries mark their Independence Day simultaneously. Several gifts and mementos were exchanged between the personnel of the two countries. A similar ceremony would take place tomorrow as India celebrates its Independence Day and performs a similar ceremonial exchange. The ceremonies act as a reminder of the shared past the two countries have witnessed, while marking the effort towards cordial relation made by the countries over the years, despite the ups and downs of the turbulent relationship between the two countries over the years. Bureau Report, Republic TV. On the other side, India marks Partition Horrors Remembrance Day, but Congress politics continues, questions Prime Minister Modi now. And now let's get you some news from across the country in brief. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has received death threats in a letter addressed to Devendra Tiwari, National President of the Bharatiya Kisan Manch. One Mohammad Ajmal said that the regime of Chief Minister Adityanath, people like Tiwari have been too indulgent in Gauraksha and Gaushalas and warned them to mend their ways or face dire repercussions. President Draupadi Murmu will deliver her maiden address to the nation on August 14th on the eve of Independence Day. The address by the president is a regular feature of Independence Day celebrations. On the eve of Independence Day, Republic from Siachen base camp. Bigger challenge for the Indian Army, the soldiers, is not only fighting with the enemy but also in adverse weather. चैलेंज की बात है तो चैलेंज इंडियन आर्मी के लिए कोई चैलेंज नहीं होता। इतने -डिग्री तापमान में सर्वाइव करने के लिए हमें स्पेशल इक्विपमेंट और क्लोथिंग इशू किए जाते हैं। पर जाने से पहले हमारे को स्पेशल ट्रेनिंग, स्पेशल इक्विपमेंट्स दिए गए। China, Pakistan cannot enter into Siachen because the Sathora Ridge is being controlled by the Indian Army here. Top headlines at 8:30 p.m. India marks Partition Horrors Remembrance Day, but Congress politics continues. Questions PM Modi now. Baghel caught controversy on the eve of Independence Day equates Savarkar to Jinnah. Mega crackdown on terror in UP. ATS arrests Jaish terrorist in Kanpur in ISIS plot. Civic apathy kills 45-year-old in Madhya Pradesh's Khargon while setting up Tiranga. Fadnavis gets additional charge in Maharashtra government handed home and finance ministries.
Veteran investor and big bull of the Wall Street, Rakesh Jhunjhunwala passes away at 62 in Mumbai. Viewers, we continue to be live in Breaking on Republic TV. I am Shivangi Shukla. Republic is reporting from Siachen base camp, where it is not just the enemy, but braving the weather and terrain poses immense challenges. Watch how our Jawans protect our nation at the world's highest battlefield. Apart from the enemy, the biggest challenge for the soldiers serving in the base camp is the weather, because you are fighting not only with the enemy but also with the weather, which is absolutely adverse, because here even in these months the temperature goes minus 15 or 20 during nights. The kind of equipments that the soldiers use for their training in these mountainous area, I'm showing you the visuals of the instruments that are being used by the soldiers while climbing or carry their training. In fact, I'll ask my VJ Firdos to show you not only the visuals of the equipment, but let me speak to one of the instructors to know about the importance and the function of these kind of equipments at such place. आप सर बताइए कि ये जो equipment इतना लगा हुआ है, इसका क्या function और किस तरह से इस्तेमाल होता है? ओके मैम, इस टेबल के ऊपर जो भी एक सामान हमने डिस्प्ले किया हुआ है, इसमें सबसे पहले रॉकक्राफ्ट का, आइस क्राफ्ट का, उसके बाद में स्नो क्राफ्ट का, उसके बाद में क्रिवास रेस्क्यू का, एवलांच रेस्क्यू का, और यहाँ पे लास्ट में जो है स्पेशल क्लोथिंग डिस्प्ले किया हुआ है। तो इसका एक एक करके दिखा देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैराबिनर ऑल टाइप, इसका इस्तेमाल जो है हर एक क्लाइंबर अपने आप को एंकर करने के लिए और इसका इस्तेमाल करते हैं। रॉक पिटोन ऑल टाइप, रॉक पिटोन का इस्तेमाल जो हम रॉक फेस के ऊपर बेस बनाकर करते हैं। फिगर 8 डिसेंडर, इसका इस्तेमाल जो है एक क्लाइंबर अपने आप को कंट्रोल से रैपलिंग करने के लिए और बिले करने के लिए करते हैं। बिले स्टॉपर, बिले स्टॉपर का इस्तेमाल भी एक क्लाइंबर आसानी से, दो बंदों को आसानी से बिले कर सकता है। नेक्स्ट गिरीगिरी, गिरीगिरी का इस्तेमाल भी हम आसानी से बिले करने के लिए और साथ ही साथ एक अनट्रेन क्लाइंबर जो है आसानी से रैपलिंग कर सकता है। जुमार, जुमार का इस्तेमाल जो है एक अनट्रेन क्लाइंबर फिक्स रोप के ऊपर अपने कॉम्बैट लोड के साथ आसानी से हरकत कर सकता है। मैं यहाँ पे शूज देख रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंस होती है ऐसी जगहों पर इस तरह की। What is the difference between a normal and this kind of shoe? ओके मैम, जो यहाँ पे शू जो डिस्प्ले किए हुए हैं, ये नॉर्मली बूट स्कारपा बोलते हैं हम इसको। ये 2 लेयर में आते हैं, आउटर एंड इनर लेयर्स में। जो आउटर लेयर हैं वो हमारे बर्फ को अंदर घुसने से बचाते हैं, और जो इनर लेयर हैं वो हमारे पाँव को गर्म रखते हैं। और इनके नीचे जो है स्कारपा शूज के नीचे जो हम क्रैम्पोन लगा के हरकत करते हैं, ये हमें फुट होल्ड का काम देते हैं, क्योंकि ग्लेशियर में हमारा पाँव है स्लिप नहीं होगा इसकी वजह से। और इसके ऊपर हम गैटर्स लगाते हैं जो कि सॉफ्ट स्नो को अंदर जाने से रोकते हैं। तो काफी मेहनत लगती होगी इस तरह के बूट्स पे चलने के लिए। जी मैम, क्योंकि इनका वेट अप्रोक्स 2.5 से 3 kg है, तो मैक्सिमम जैसे ज्यादा लंबा हमने रास्ता तय करना हो तो वेट के साथ जो है काफी इसमें लोड पड़ता है और जल्दी थकान ज्यादा होती है। तो इस तरह के शूज पे चलने के लिए कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग होती होगी सोल्जर्स को? यस मैम, इसके लिए पर्टिकुलर ट्रेनिंग हम इसके अंदर जो ट्रेनिंग देती है 3 वीक की ट्रेनिंग होती है, उसी के अंदर इनको उनका अनुभव कराया जाता है और उसके अंदर में इनको ट्रेनिंग दी जाती है। Well, in fact, our Republic is reporting from Siachen base camp, where it's not just the enemy, like we just showed you. Zinal got to the report. And in the training camp in Rajouri, Indian Jawans are being made ready and prime. Watch our brave hearts target practice in this exclusive report of Republic Media Network. The Jawans of the Indian Army deployed along the line of control are all prepared. They are battle ready to counter any kind of situation that is emerging from the adversary, especially the nefarious designs of the Pakistan. And these brave hearts of the Indian Army are equipped with Negev, AK, snipers, as well as the newly introduced 6 rifles. These rifles have the capacity to destroy and decimate the nefarious plots of the enemy. And these Jawans are undergoing the rigorous training here at the training camp in the Rajouri, where they are being prepared to tackle any situation. Now they will be doing fire. It will show the might of the Indian Army on ground, that how these brave hearts of the Indian Army
They are all prepared for any kind of contingency. Now Gaurav is showing you that how different weapons, including the 6-or, the AK, the Ansas, the Negev, they will be taking a shot at the enemy. Important to mention that the newly introduced 6-or and the Negev have proved to be really very lethal for the Pakistani side, as they have totally decimated the terror infrastructure as well as the plans of the enemy, that how can they even dare to enter the Indian side or have the nefarious eyes on the Indian side. This is how the terror infrastructure is decimated at the line of control. As the nation celebrates 75th Independence Day, now the forces are on the alert on the international border as well as on the line of control. Right now we are in the Rajouri sector of the line of control, where the troops of the Indian Army, they are alert. They are keeping a strict vigil on each and every movement of the enemy, as we are just a few meters from the Pakistani side, which is always in a bid to sneak into the Indian territory and to carry out some major terror strike inside the territory. This is the same sector where the Pakistani terrorists attempted a suicide Fidayeen attack on the Indian Army camp, and now the security has been beefed up on the international border as well as on the line of the control. These jawans of the Indian Army are using every possible tool so that they can keep a strict vigil on the ground. The sniper dogs, specially trained sniper dogs of the Indian Army, they are also keeping a check on any possible explosion on the route. And also the new threat that is being posed by the adversary is the drone challenge, and to counter the drone challenge, drones are being used by the Indian side also to keep a strict vigil on ground. See how these drones are manning the line of control in the Rajouri sector, and this clearly sends a message to the enemy that we are not only keeping a strict vigil on ground, but also from the sky we are monitoring each and every movement of the Indian Army here on the line of control. The jawans of the Indian Army, they are doing patrol along the line of control, and this is what sends a clear message to the Pakistan that the Indian Army will maintain the sovereignty and the integrity of the country no matter how many challenges are being posed by the adversary. And on the 75th year of the independence, the message from the line of control is very clear that we will protect our sovereignty, integrity and the unity of Mother India at any cost. These are those brave hearts who have made supreme sacrifice at many times on the line of control, but have ensured that everything goes smooth and well. We at Republic have always said forces first, nation first. Republic Media Network is reporting from the frontiers of the Indian territory near the border with China, showing you how our forces are training to keep the Chinese at bay. It's 5:30 in the morning and a day in a soldier's life has just started. We are very close to the line of actual control here in Menchuka. We are reporting from a battalion of the Indian Army, where you can see the bravoes of the Indian Army, the garrisons of the LSE is starting off their day with the morning PT. This is a regular affair in the battalions, in the companies, in the units of the army. After this PT, they will go for the other daily exercises inside the camp, and as the day progresses, we will be closely following the bravoes of the Indian Army to bring you a picture from a day in their life. After the warm-up round, now we are at the circuit training area of the battalion, which is especially designed by this battalion for keeping in view the high altitude and for regular fitness of the jawans as well as the officers here. हमारे साथ यहाँ पर है सूबेदार आजी खान साहब, जो कि IMA में भी ट्रेनर रह चुके हैं. आजी खान जी, ये जो
ट्रेनिंग है, ये सर्किट ट्रेनिंग एरिया जो आप लोगों ने बनाया है, ये खास तौर पे यहाँ पे डिजाइन किया गया है, हमें बताया गया। क्या थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से इस पूरे चीज को डिजाइन किया गया? सर एक्चुअली हम जिस वातावरण और जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हम चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे हुए जंगल है और नाले हैं। तो इस जगह हमारे को हमें पेट्रोलिंग करनी होती है, कोई जो ऑपरेशनल एक्टिविटी करनी होती है। तो इसमें क्या है साहब कि हमारे को बहुत हार्ड फिजिकल की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारी यूनिट ने क्या है कि एक सर्किट ट्रेनिंग तैयार किया हुआ, जिसमें हम जवान को हर तरह का ट्रेनिंग दे करके और उसका फिजिकल स्टैंडर्ड अप करते हैं, ताकि जो ऑपरेशनल टास्क को पूरा करने में जवान को आसानी होती है। क्योंकि हमें कई बार क्या होता है कि बहुत ही कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है, जैसे कि कोई जंगल है, पहाड़ है, कई बार ऊंचे पहाड़ है जो कि 70 डिग्री से भी ज़्यादा ग्रेडियंट है, उन हालात में हमें गुजरना पड़ता है, साथ ही नालों से है। तो इस प्रकार से हम ट्रेनिंग दे करके जवान का जो फिजिकल स्टैंडर्ड अप करते हैं, ताकि वो किसी भी कंडीशन में अपने टास्क को पूरा कर सके। यहाँ पर खास तौर पे ये जो बकेट कैरी हो रहा है, पावर लिफ्ट हो रहा है, साथ ही साथ बेबी कैरी, सारे ऑब्स्टिकल्स यहाँ पर रखे गए हैं। तो ये आपके रेगुलर एक्टिविटीज में जो हर रोज आप लोग एक्सरसाइज करते हो, उसमें जवान्स का जो फिजिकल बेनिफिट्स होते हैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? हाँ सर, एक्चुअली हम लोग हमारा डेली मॉर्निंग पीटी होता है, और डेली मॉर्निंग पीटी में क्या है कि हम अलग अलग दिन अलग अलग ट्रेनिंग शेड्यूल बना के रखते हैं। जैसे कि एक दिन हमने एंडोरेंस पीटी किया, अगले दिन हमने बीपीटी किया, अगले दिन हमारा योगा हुआ, अगले दिन हमने 10 से 15 किलोमीटर का रोड मार्च करते हैं पूरे बैटल लोड के साथ। यहाँ पर खास तौर पे जो ट्रेनिंग के साथ साथ अभी जो ये ट्रेनिंग हो रहा है, सुबह हम लोगों ने देखा आप लोग वार्म अप रन के लिए निकले, क्रॉस कंट्री करते हैं, इससे और यहाँ के बाद अभी क्या करने के लिए जाएंगे आप लोग? क्या क्या एक्सरसाइज? सर जब मॉर्निंग पीटी में हम लोग हार्ड पीटी करते हैं, जिसमें पूरे शरीर के हर रगपट्टे को हम एक्सरसाइज देते हैं, जिससे क्या है कि जवान का अपर और लोअर बॉडी मजबूत होता है। इससे क्या है कि जवान में एक तो जोश, फुर्ती और मोरल अप रहता है। आफ्टर पीटी हम लोग सर 1 घंटे का ब्रेक होता है, जिसमें जवान अपना ब्रेकफास्ट करता है, नहाना धोना करता है और सेकंड पीरियड के लिए तैयार होता है। जैसे कि आज हमारा सेकंड पीरियड है कॉम्बैट ट्रेनिंग का, जिसमें हमारा स्लेदरिंग है और अनआर्म्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग है सर। As you can see here, this battalion has designed this high circuit training area on its own, and it's one of its kind, keeping in view the altitude and also the challenges that are being faced, particularly while defending the LSE. Regarding the high altitude area along the LSE is full of challenges. In some places, if the soldiers who carry equipments and luggages more than 20 kgs need to climb down the mountains, in some places they need to climb up. Would like to know on the essence of these activities that they do every day in their day-to-day life. We have Major Avilas Kulkarni with us. Major Kulkarni, what is the essence basically if we talk about the rock climbing and rappelling along the LSE that you need to carry out on a regular basis? Being deployed in the hilly and treacherous regions of this region, it is imperative for all the soldiers to be especially trained in all the life skills. Over here, we train soldiers in various rock crafts, rock climbing, rappelling, river crossing and firing drills. As you see, this region particularly requires physical and mental strength. Therefore, each and every soldier trains here in all the possible life skills and therefore moves ahead in high altitude areas. So now we will be taking you to show how the soldiers face the challenges with a smile on their face every day as they move towards higher altitude locations situated in the LSE. Viewers, we're getting in more details of the Independence Day celebrations. And what we know is it will be led by PM Modi for the first time. Some information has come in. Let's share that with you. For the first time, homegrown howitzer guns will be used in the ceremonial 21 gun salute. 26 officers, supervisors and 127 cadets and youth from 14 different countries make maiden, I repeat, maiden entry Independence Day at Red Fort as part of the NCC Special Youth Exchange Program.
And special invitations have been also given to Anganwadi workers, street vendors, and the Mudra scheme borrowers and the mortuary workers as well. Top updates right now ahead of the 76th Independence Day. Security has been tightened by the security forces in West Bengal Siliguri district. Heavy patrolling was observed at the Indo-Bangladesh border. As India is gearing up for the 75 years of independence, Tiranga boat rally was seen as part of the Har Ghar Tiranga campaign in Goa's Panaji district. Visuals show the Tiranga boat rally to commemorate the Azadi Ka Amrit Mahotsav. With India gearing up for its mega celebration for completing 75 years of independence, 176 battalions of BSF along with locals participated in Tiranga Yatra as part of the Har Ghar Tiranga campaign at the Indo-Bangladesh border. Security has been tightened at Indo-Pakistan border ahead of its 76th Independence Day. Visuals from all across India showcased mega celebrations for the big day for all Indian nationals. A beautiful performance was presented by the people of Ahmedabad in Gujarat as India is gearing up to celebrate 75 years of independence. Farmers were seen holding the national flag with pride as they danced for Azadi Ka Amrit Mahotsav. Here's we're getting some breaking news right now ahead of Independence Day. Another massive terror crackdown in Jammu and Kashmir as an encounter operation is currently underway in Rajouri. Well, that's a big news we're getting at this point of time. That encounter operation is right now underway in Rajouri. We'll be getting you all the top details as what we are learning so far is that security forces have rushed to the spot to stop this terror operation, this encounter which is taking place in Rajouri. And we also believe that a couple of terrorists are trapped as this encounter continues. The location of this encounter is in Rajouri in Sujan Hill. That's what we are learning so far, viewers, as this encounter breaks out in Rajouri just ahead of Independence Day. And right now, like we just told you, teams of security forces are rushing to the spot to crack down in this incident of terror which is coming in from Rajouri. So a massive crackdown there coming in from Rajouri just ahead of Independence Day. Gursimran is joining me. Gursimran, this is looking like a crackdown which security forces are taking very seriously. They have rushed to the spot. What else can you tell us? We also know that a couple of terrorists are trapped. Yes, we are getting to know that 3 to 4 could be the number of the terrorists that are trapped in the Buddhal encounter, and this is in the Sujan Hills where this encounter is taking place. There was regular inputs with the security agencies, especially with the Jammu and Kashmir police, that there is a presence of a group of 4 to 5 terrorists in the area, based on which the regular operations were launched by the Special Operations Group of the Rajouri along with the Indian Army. And important to mention that a specialized team of the security force too has been rushed to the spot, as forces don't want to give these terrorists a chance so that they can escape using the advantage of the darkness. And this is going to be an important encounter because we have seen that the last group that was neutralized by the Indian Army was planning a Fidayeen attack on the Indian Army installation in the Pargal area of Rajouri that was thwarted. And today itself, the Northern Army commander has reviewed operational preparedness and security in the area. He was also briefed about the presence of the terrorists in the area and the counter-terror operations that were launched by the Indian Army. So now these terrorists, possibly the number could be around 3 to 4, have been trapped. The heavy exchange of fire is as of now going on in the upper reaches of the Buddhal, and additional reinforcement has been rushed, including the specially trained forces. All right, Gursimran, thank you for joining us with all those details. We continue to track the story, and much more is coming up on the other side this Sunday night.
Starting off with the mega crackdown on terror in UP, ATS arrests Jaish terrorist in Kanpur in the ISIS plot. The big bull of the Indian markets, Rakesh Jhunjhunwala, is no more. Born in the year 1960, Jhunjhunwala passed away at the age of 62. He was brought dead this morning to Mumbai's Breach Candy Hospital at 6:45 a.m. Heading companies, Hungama Media and Aptech, among others, the veteran stock market investor had recently inaugurated low-budget airlines Akasha Air, often referred to as India's own Warren Buffett. He passed away at the age of 62 following health complications. In other news, a total of 12 bodies recovered so far in August 11 boat capsize incident near Banda in UP. Rescue operations continue following disaster as NDRF and SDRF continue to look for those remaining. Shiv Sangram party leader Vinayak Mehte killed in road accident at Khopli tunnel in Maharashtra's Raigad. Maharashtra's Chief Minister Eknath Shinde speaks on his demise, stating he had contributed significantly towards the Maratha Andolan and was a good leader. A Dalit child allegedly beaten severely, causing his death over drinking water in Rajasthan's Jalore. He was allegedly beaten up for touching a water container at his school and was beaten by his teacher. The big bull of the Indian markets, Rakesh Jhunjhunwala, is no more. Born in the year 1960, Jhunjhunwala passed away at the age of 62. He was brought dead this morning to Mumbai's Breach Candy Hospital at 6:45 a.m. Viewers, we continue to be live and breaking. Preparations have started to celebrate the Independence Day in Mumbai. To mark the Independence Day, Mumbai police organized Amrit Mahotsav of Freedom Run today, which was flagged off by Maharashtra Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis. Here's more. Well, here we can see it's a Mumbai police who have organized the Amrit Mahotsav Freedom Run. And we saw there were a number of vehicles with the Tiranga, now with the flag, the green flag, which has been flagged off by Devendra Fadnavis. And now the Mumbai police has started their marathon. It's a freedom run of Amrit Mahotsav. It's a proud moment for every Mumbaikar, for every nation. What we have been witnessing and what we have been told, that it's a 3,500 police official has taken a part in this. That's even a women police officials across the Mumbai police station, where there are police officials around more than 3,500 police officials have taken a part in this Amrit Mahotsav Freedom Run, which is organized by Mumbai Police itself. A proud moment for every Mumbaikar, a proud moment for every nation. The marathon, which was flagged off by Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis. We can see Mumbai Police Commissioner Vivek Phansalkar on stage. Also Praveen Darekar, Joint CP Crime, Suhas Savarke, Joint CP Law and Order, Vishwas Nagri Patil,
all the senior police officials to motivate their police officials on road who are started with the marathon run, are here to motivate them. This is nothing but a beautiful picture what we have been witnessing at this point of time. We saw the numbers of vehicles that went to a lane which will give a free lane for the runners. Viewers, much more coming up on the other side of this very short break. Is the burning question, Baghel court's controversy on the eve of Independence Day equates Savarkar to Jinnah? Debating that on the burning question tonight with Shravan Sen. The Himachal Pradesh Assembly, in line with a few other BJP-ruled states, passed a bill to curb the mass conversions and raise the maximum punishment to 10 years of imprisonment in Freedom of Religion Act. हिमाचल प्रदेश में आपने देखा होगा कि जो एक नई परिस्थितियां बन रही थी, कई वर्षों से हम देख रहे थे हिमाचल प्रदेश में कि बदले की भावना से, प्रतिशोध की भावना से कुछ चीज़ें होती थी, बहुत ज़्यादा नहीं होती थी लेकिन फिर भी होती थी। हमने उन सारी चीज़ों पर रोकने की कोशिश की। Now here's some news in brief, viewers. Renowned author Salman Rushdie was taken off a ventilator and will be able to talk, as was confirmed by his agent. The person accused of shooting author Salman Rushdie at an event pled not guilty over the charges, and the 24-year-old from New Jersey has been charged with the attempted murder and assault after his attack on the author. The AIMIM state president demanded that the Bihar's new government have a deputy chief minister from the जब तक हमारे वतन के सरहद पर सीमा सुरक्षा बल जैसे पहरेदार रहेंगे, तब तक हमारे वतन के सरहद को कोई छू नहीं सकता। Burning Question, powered by Century Ply and Sharda University. Ahead of the Independence Day, Bhupesh Baghel equates Jinnah to Savarkar. Storm over Baghel's remarks on Savarkar as he compares him to Jinnah. Time to end the politics over freedom struggle. India marks Partition Horrors Remembrance Day, but Congress politics continues, questions Prime Minister Modi now. Mega crackdown on terror in Uttar Pradesh. ATS arrests Jaish terrorist in Kanpur in ISIS plot. Veteran investor and the big bull of Dalal Street, Rakesh Jhunjhunwala, passes away at 62 in Mumbai. Well, the nation today marked a Partition Horrors Remembrance Day, recalling the dark day of 14th of August 1947, when the map of India was altered forever, thereby altering the lives of many innocent Indians. But the Vadra Congress has once again insulted this memory with its political statements. And let's not forget the countless number of people who have suffered because of the partition and the baggage that many
till date continue carrying along with them this particular baggage of the partition. The idea behind remembering that was only not to forget what many Indians actually had to go through just because of the partition. Here's a report and then we debate. August 1947. A dark page in Indian history. Prime Minister Modi took to Twitter to pay tribute to the victims of partition. UP CM Yogi Adityanath conducted a march on account of Vibhajan Vibhishika Smriti Divas. Central ministers and senior BJP leaders conducted silent march across the country to remember the horrors of partition. But the Vadra Congress used the solemn occasion to divide, politicize and insult our freedom hero. दो राष्ट्र के जो सिद्धांत है उसको सावरकर ने प्रस्तावित किया और उसका समर्थन जिन्ना ने किया। तो विभाजनकारी तो ये लोग हैं। देश की आजादी में उनकी भूमिका क्या रही और अभी भी अंग्रेजों की आलोचना नहीं करते, ये गांधी की आलोचना करते हैं। Chhattisgarh CM and senior Congress leader Bhupesh Baghel not only compared Swatantra Veer Savarkar to Jinnah, but also alleged that it was Savarkar who proposed the two-nation theory. And yet, Baghel wasn't the first and only Vadra Congress leader to make such controversial remarks about the partition. Congress MP Jairam Ramesh posted a thread of tweets politicizing the Partition Horrors Remembrance Day. The statements by the two Vadra Congress leaders is seemingly a desperate attempt to retain the Nehruvian claim over India's freedom struggle. But isn't it taking it a stretch too far by running down our freedom fighters and politicizing an incident which altered the map of India and lives of Indians overnight? Bureau Report, Republic TV. Joining us with the burning question tonight, Shazia Ilmi, National Spokesperson of the BJP, Lieutenant General Sanjay Kulkarni, former DG Infantry and Defence Analyst, Amit Raina, Kashmiri activist, Dr. Sumansi Raman, political analyst, Sameer Singh, National Spokesperson of the Samajwadi Party. Opening up the debate is Shazia Ilmi and Sumansi Raman. Sumansi Raman, let me straight away begin by asking you, if Veer Savarkar had basically approved of the two-nation theory, then would he have actually said this, and I'm quoting, "We shall ever guarantee protection to the religion, culture and language of the minorities." It is equally unlikely that he would have said that no one would be allowed special weightage or representation, or that the Hindus as a nation are willing to discharge their duty to a common Indian state on equal footing. And the very statement that the Congress party is latching on, and not the first time. You've had Shashi Tharoor in some lit fest also saying that the proponents of this two-nation theory starts with Golwalkar and Veer Savarkar. Now this entire Congress version of history that we've always been thrust upon, Sumansi Raman, without looking at the nuances, without even looking at the statement, therein lies the biggest problem. Will you or will you not admit that this was a statement that was made by Veer Savarkar himself? And I'll also come to that very statement that the Congress latches on in a short while from now. But first, you've heard what I had to say, my opening remarks as far as this debate is concerned. I want you to respond. Yeah, okay. First of all, there are, multiple records, which go on to say about how Savarkar was sort of, more in favor of a division based on religious lines. Now, whether you want to call this a two-nation theory or whatever is a matter of conjecture. The point really is what Mr. Baghel has said is something that has been written in multiple books
Now you want to say that all those books were written by Congress people and they're all fake and we are now in the process of rewriting history? That's fine. That's a choice. I mean, history is always written by the winning side, and right now the winning side is the BJP. So they can rewrite history in any which manner that they would want to do. At some point in time, I'm sure even the pardon letters which were sent by Mr. Savarkar to the British government will probably be erased from history at some point of time. So in this process of rewriting history, this is I would say a comparatively small step. But Sumansi Raman. Yeah. I started off actually quoting, which has been widely quoted by several of the historians. This is not my figment of imagination, Sumansi Raman. When I'm quoting Veer Savarkar, and this has been by various historians. It's also about the interpretation. Quote-unquote historians who are busy rewriting history, and this is a very important part of their project. Today there was an ad in papers in Karnataka. So are you suggesting that the BJP? I mean, how absurd is that? All part of history rewriting project. Why doesn't Shazia and his photo did not figure? Okay, so you're basically saying that there is a project that today. If I'm not wrong, Sumansi Raman, you are basically Shazia. This is what basically Sumansi Raman is accusing you of, that there is a project that has been Bharatiya Janata Party, and the project has been titled as a rewrite history. They also say that you have these fly-by-night historians who have now come up, they've opened shops, and they're basically rewriting history to the whims and fancies. I don't know about that. You perhaps would like to respond. But as a student of history and sociology, all that I know, so there are 2 points. As far as Veer Savarkar is concerned, Shazia, correct me if I'm wrong, he was after all a realist. Therefore, when he spoke about there being two nations of Hindus and Muslims in India, he was expressing an unpleasant truth, a bitter reality. And in fact, a solution can only be found when one accepts the reality. And to this end, Shazia Ilmi, and I'm quoting once again Veer Savarkar, he says, it is safer to diagnose and treat deep-seated disease than to ignore it. Let us bravely face unpleasant facts as they are. I want you to respond to the allegations that are being leveled, and also... No, I'll come to that. I'll come to that threadbare. It's not a one-sided debate, Sumansi Raman. I am putting out all facts. I am not here to take any sides. I'm here to basically raise questions. Yeah. So Shazia, respond. So while my friend Sumanji, with whom I've been locking horns for many years now, while he believes that there should be one point of view, I for one actually believes, like many others, that there are, and history need not be written from just the winning side or from the point of view of Nehruvians or those who believe in Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru as the only protagonist of India's freedom struggle. I have said it many times earlier that the subaltern schools, the struggles of the peasants, the struggle of the other workers, and various other revolts that have happened need to be talked about as much. So it is just not about just the Veer Savarkar's point of view. It is only now with Uday Mahurkarji's book and Vikram Sampat's book, in fact, which I read, and these are big, huge volumes, that I realized I read. And I am so greatly impressed with the man. Now, so we can speak about that, and I think a lot has been said and has been conceded about Veer Savarkar ji's role Vikram also, and of course there's Nehru ji or Indira Gandhi. So a lot has been said. But while you want to refer to the 1937 speech of Veer Savarkar ji, as everyone else is talking about, which talks about the two-nation theory, much before that there was a plan for the partition, and the plan was underway. Because how else would you explain the Mopla massacre of 1921? Now if you see, and who talks about it? Interestingly, Suman Raman, you do not have to read either Vikram Sampath ji
my wonderful friend, or my other historians who come from the other side. But Annie Besant, you know, the member, the brilliant, fantastic theosophist, philanthropist who believed in India's self-rule and the Irish self-rule, she talked about it, and you must read her book, which talks about it and what happened actually. And so this precedes, and this was when in the Mopla massacres actually established the fact way beyond and much before Veer Savarkar's assertion. And I can come to Veer Savarkar ji and the great admiration I have for him and his mind and how he thought Indians should be recruited at the cost of the British, and how they should be working towards independence. So he had a different idea, and not just that, what his views were on caste system. So Shazia ji, there can be multiple views about opinions. You can't have multiple views on facts. There cannot be different views on facts. There is only one fact. I'll request both of you. One second. You can't have different views on facts. I'm sorry. The whole problem is facts are being... No, one second. Sumansi Raman, talking over each other is not going to really help. Just does not make sense. Shazia, just hold on. Sumansi Raman and Shazia, both of you, there's no point talking over each other. We are talking about a very serious issue, and people would like to know where we stand. Okay, Shazia, I'm giving you another 30 seconds. You make your opening remarks. A quick rebuttal coming in from Sumansi Raman. Sumansi Raman, not more than 30 seconds of rebuttal, and then I'll open up the debate with all our guests who are joining. Look, I'm not going to get into this debate of my historian is better than your historian. That serves no purpose. The point is, there is a generally accepted version of events. Now, we want to recreate those events in a manner which highlights our ideologies and our beliefs in today's context. Now, I'm not saying that it has not been done before. It has been done before. Like I said, history is written by the winning side. But a fact cannot have multiple views or multiple sides. A fact is a fact. It's the same fact for you and the same fact for me. Okay, you're talking about absolutely. I totally agree. So, Sumansi Raman, I totally agree with one thing that you are saying. Facts cannot be denied. You are absolutely right. Okay, Shazia, quick response, because I also need to go across to my other guests, and I'll come back to this fact part that Sumansi Raman is talking about. A quick response, Shazia. Allow me to also bring in other guests who are waiting. Okay, both of you, you can't continue like this, because I can't have the entire debate only with both of you talking. Shazia, a quick response to Sumansi Raman. 30 seconds. Can facts be denied? I want a response, and then I'll bring in my other guests. I will not repeat. Annie Besant's book is a fact. Mopla massacres are a fact. Your historian, my historian, Annie Besant was, in the Congress party. We all know about Congress party's association with Annie Besant, how integral she was. So there's no question. Generally accepted view, I challenge that. Now, what is a generally accepted view? What is so factual about the generally accepted view? What is so accepted about it? Who accepts it? Is the question. And I challenge that with complete authority and citation of facts at my disposal. Whether it's the National Archives or any books you can go to. Thank you. I rest my case. Let's talk about the facts, and let's talk about that one statement that was made by Veer Savarkar. This was during the Mahasabha convention in Karnavati in 1937. Karnavati at that point in time, and now Ahmedabad. This was basically during the presidential address at the All India Mahasabha convention. I want Tausif Ahmed Khan and Lieutenant General Sanjay Kulkarni to come in. Tausif, we are talking about, so the problem here, let's go threadbare, one by one. It's that one statement, and I'm going to quote tonight, where Veer Savarkar had said, India cannot be assumed today to be a unitarian and a homogeneous nation, but on the contrary, there are two nations in the main, the Hindus and the Muslims in India. Quoting the Samagra Savarkar Vadmai, Volume 6, Maharashtra Prantik Hindu Sabha publication, 1963-65, page number 296.
So this is what has the Congress party has latched on. Now what they're basically forgetting, Tausif, and as Suman C. Raman talks about facts. So I'm bringing out all facts, then you can take on the debate. The very next day, there was a clarification. This part of the speech was criticized even when he was alive. In fact, I'm given to understand it has been documented, as Shazia was also pointing out. You can go to the archive section, perhaps take a look at it, where Savarkar has clarified his statement to journalists on 15th of August 1943 in the office of the Marathi weekly Adesh, published from Nagpur. He's clarified in his position in an interview given in Mumbai on 23rd of August 1947. In the interview, he said, people still do not understand the important thing that stating the fact of Musliman and Hindu nations being present in Hindustan is not to accept the Pakistan adamancy of carving a country of the Muslimans, while 200 nations that consider themselves separate from the Hindus have presently entered Hindustan by force and are demanding partition of Hindustan. It is not by a woolly-headed and cowardly denial of this fact, but rather by understanding, facing and changing it shall an independent, undivided and indivisible Hindu nation alone shall not without doubt remain in Hindustan. But as in our history, when the Hindu nation successfully rallied under the Hindu flag, the Hindus should come forward and rise unitedly. We should not confuse between nation and state. Even if the state goes, the nation remains. Now it continues, where he also talks about the primacy as well as not perhaps only focusing on one faith. So Tausif, there was a clarification that was also put out. So where exactly is this theory that we still talk about, that Veer Savarkar is the one who's the main proponent as far as the two-nation theory is concerned? I've put out everything for you to now debate. There is a very famous Urdu शायरी, सच अगर घटे या बढ़े तो सच ना रहे और झूठ की कोई इम्तिहान ही नहीं. What will you deny? The Sangh and Hindu Mahasabha, what will they deny? They have a history. If we take for an example our national flag, they have a history of rejecting the tricolor. And I'll give you, I'll quote a letter from the then Prime Minister Jawaharlal Nehru to Shyama Prasad Mukherjee, which was written on 28th of September 1947. Just 2 lines. You have read so many pages. I will just read 1 or 2 lines. In that letter, and I'm quoting Jawaharlal Nehru, he wrote a letter to Shyama Prasad Mukherjee, who was the interim minister in the then cabinet from 1947 to 1950. He wrote, I did not even know that the Bhagwa Jhanda was flying over your house instead of national flag. It seems to me very odd that a minister should fly any flag but the national flag. This is on record. And the other example I can give you, undeniable fact. The RSS headquarters refused to hoist national flag after 52 years of independence. Only in 2001, when 3 people attempted to hoist national flag in the headquarters, the RSS lodged FIR and there was public outcry. Then in 2002, they started hoisting the national flag. So the Hindu Mahasabha, okay, the Sangh and their followers, which is today's BJP and Bajrang Dal and so on, they have betrayed the constitutional ethos. So, they have betrayed because they supported the killers of Mahatma Gandhi. They are the children of Nathuram Godse. I've got your point. I'm sure General Kulkarni has also fairly understood. Mahatma Gandhi. Okay, I have understood. I'm sure General Kulkarni has also fairly understood which direction are you basically moving towards. You're basically also raising this entire criticism or an argument, whichever way you would like to put it across, General Kulkarni, that every time we spoke about the Har Ghar Tiranga, there was only one retort that came in from the Congress party and the ilks of Tausif. They said that what happened in the RSS? Why did they not hoist the flag? They should be the ones who should be hoisting the flag. When they did not for so many years, how are you expecting anyone else to do it? Now, those are the arguments that we always bring our country down to, politics. It's everything about politics. General Kulkarni, as someone who served
the nation for several decades put together, have fought wars, have been at the frontiers, have understood the real meaning of what our flag basically determines and what it means for everyone, for every armed soldier, and not just the armed soldier, for every citizen perhaps. But unfortunately what happens is that today also on the eve of the independence, we would love to bring in controversies, court controversies, by saying that look here, you know, two-nation theory, etc., but forgetting of what the country has actually achieved in the last 75 years. I must first thank you and wish everybody a very, very happy Independence Day, which is coming tomorrow. Having said that, let's not politicize the Independence Day. That's my first take on this. Even as regards the national flag is concerned, we get independence on the 15th of August 1947, and on the 22nd of July 1947, the Indian national flag has been designed and put up, and thereafter the flag committee under Dr. Rajendra Prasad accepts the flag, and that's all. Even Mahatma Gandhi at that point of time did feel a little hurt when the charkha was taken away, because from 1921 to 1931 we had a Tiranga, but it didn't have saffron, it didn't have white and green, it had white, green and red with a big charkha in the center. And when the chakra was adopted and then given and shown to Mahatma Gandhi again, then Mahatma Gandhi, much that he had wanted all along the charkha and not the chakra, accepted it, having seen, and even Dr. Rajendra Prasad himself told Tyabji that please go and show it to Mahatma Gandhi, let's take his acceptance because he has an objection. Come on, let's not politicize, let's not go into details. Each one of us have read history, all of us know how the flags have come into existence, when was national anthem accepted. Now if you were to say the national anthem, the plate that was on the 15th of August 1947 in United Nations, what is the national anthem? Obviously the one that the Subhash Chandra Bose had, because we took time. It was 23rd of January 1950 that we have a national anthem. So there are certain times in history. So we must not at this point of time politicize something. Everybody had their views, everybody who was fighting, it is the National Congress. Is that the Indian National Congress and the Congress today are the same? They're different. That time everybody was part of the Indian National Congress. Everybody wanted freedom. Everybody wanted independence. Everybody, all tooth and nail, wanted independence. And today we are at the 75th anniversary. We must all celebrate. I think it's time we do not start, backbiting. No, he said this, he said that. Well, why did you do this? I think that this is not the time. This is the time to see how much we have gained in 75 years. Imagine a national flag, Tiranga that we call. 54 other countries have Tiranga also, of different colors and different shapes and different sizes. But the flag that we have, the national flag that we have, we ought to be proud of it. We must say, yes, what we were and what we are. And that's the way we look at it. And not this petty politics. I think we should be out of petty politics. And we must see how much we progressed technologically, how much has a man reached where it is, what is the state of literacy today. Everybody has contributed. Not one man has made this country. Everybody has contributed, whether it is economically, whether we are looking at technologically, whether we are looking modernization of military, whether we are looking at literacy, you're looking at human resources, you see education, you see health, progress. Much needs to be done. But that is one part. But today we politicize that so-and-so said this, so-and-so said that, so-and-so said this. Well, how many of us would know that Fazli Hussain was the man who actually looked at it, a communist who turned nationalist, and it was only on the death of Fazli Hussain was called Mian Sahib of Punjab. Did Jinnah then get back to India because he was then practicing and he didn't want. The moment he died, he got back. Obviously, who's looking at partition theories? Obviously, Jinnah, and there is no denying the fact. Everybody, so many people would have their views to it. But let's not politicize. Today, we have in India, and we look at India with pride. We have a national flag, with a national anthem. We sing with pride. We'll have a flag before die for me as an army man. It's Naam, Namak, Nishan. And I look at it that yes, that is the country that belongs to me. I'll die for this country. I'll live for this country. And this is where we are. And we must progress and go miles and miles. I go along with Pandit Nehru always said, miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. Definitely, we have miles to go. But this is no time for politicizing. Let's all join in and celebrate this, the 75th Independence Day. Yeah. No time for politicizing. Samir Singh,
Sabir Singh, why isn't that perhaps there is one occasion, that's one occasion where political parties decide not to get into petty politics and perhaps cherish what the country has achieved despite the kind of hardships that we have actually gone through? Be it at all indices, be it our literacy rate, be it our infrastructure, we have progressed leaps and bounds. So why is it that you want to get into the political parties, opposition parties? You all believe that this is the perfect opportune time to, target, and not just target your opponent. At the end of the day, what you do is also tarnish the image of your own country. Shravan, first of all, thank you so much, and I'd like to, on your platform, I'd like to congratulate all the viewers on the eve of the 75th Independence Day. Coming back to what your question was, Samajwadi Party is absolutely against politicizing the Tiranga or politicizing nationalism. We've never done that, and we're completely against it. We don't want to blame the BJP. We don't want to, play blame games. And at least on this auspicious occasion, because 75 years is a huge time, and as my previous speakers in the panel, they've spoken at length about how India has grown, and we are really proud of what India has achieved in the 75 years. In fact, we want to reiterate the fact. We want to remind the BJP, who claims that everything in India is happening or happened after 2014. We don't want that. We want people to believe, we want to accept the fact that India has achieved a lot in all those 75 years. But somehow, when you say that politicizing, we should not politicize, I agree, we should not politicize. But the ruling party, the BJP, should also understand that while we are celebrating the 75th anniversary of independence, let's not go back and question what the Congress has done, or let's not say that Congress did not do anything. You need to accept what the country has become today. The Congress has a huge role to play in it, and a lot of other leaders. In fact, every political party, every government that has come to power since 1947 has a role to play in the development of the country. So we are not saying that the BJP is not doing anything, or we don't want to politicize what's happening currently. But then if such a campaign like the Tiranga campaign, the Har Ghar campaign that has come up, if we have reservation against it, it's because things happen, like we say that we should not politicize it, and if we have a reservation against the campaign, then I think all of us have seen the BJP chief of Uttarakhand, Mahendra Bhatt, saying that nation won't trust homes without flag. Now, is this the kind of patriotism we want in the country right now? Is this the kind of message we want to give in the society right now? Because these will only add fuel to the fire that we're already seeing how unstable the country is in terms of communal angles. And then you want another rift in the society by saying that people who are not hoisting flag, you can't question the nationalism or the patriotism of people who are not hoisting the national flag. Of course, we should, but that has always been a personal choice. Amit Raina. And I think we should respect that. Everybody should respect it. But then So are you saying there is a problem with campaigns like Har Ghar Tiranga? Amit Raina, seems to be some sort of a bone of contention, Amit Raina, for the opposition parties. They're saying that, look here, we are basically, or the government essentially is basically trying to shove it down the throat. Okay, it's for political gains. Okay, if it's for political, Amit Raina, I want a quick response from you, and then also perhaps Shazia, because this question is more directed towards you, but I just want a quick response from Amit Raina, and then perhaps Shazia, you can also respond. The allegation is direct. One of us, every Indian, on the 75th year of independence. Now coming to the sad thing is that we need to remember that nations who do not learn from history are doomed to relive it. And today, unfortunately, that's what is happening. That's what opposition parties are doing. Look at the way the terror apologists, look at the way partition apologists, look at the way these political parties are today finding ways to excuse Jinnah and Muslim League of Opposition of partition, saying that they are not responsible for partition. They are finding ways to blame Hindus
for partition of India. They are finding ways of blaming the freedom fighters of India on how India was divided. Someone was talking about facts. Dear sir, the fact is that the first time the theory of two nations was propagated by Sir Sayyid was in 1876, many years before even Savarkar was born. It was in 1925 Aligarh where Justice Rahim went and defined what does two nation mean. It was much before 1937 speech of Damodar in Karnavati. So let us not, if you want to go by facts, then we go by timelines. And if you remember what Savarkar said two nations but under one, in one country, under one constitution. That was his way of defining the two nation part of it. So it is very sad today that in the 75th year, when today we should be remembering and learning from the horrors of 1947, when this country was divided, when 1.5 million, 15 million people died for a community which took away 25% of the land when only they were 16%. And today again this country is being divided. There are attempts to divide this country again, and that is why there is an attempt made to rewrite the history. That's why now attempt is being made to rewrite history, saying that it was Hindus that divided this nation. This is the state of this country today. Unfortunate, so sad that today we are, instead of celebrating 75th year of independence, opposition parties are trying to find ways of how to blame Hindus for what has happened in this country. Was it Hindus which went and launched direct election in 1946? Is Congress today telling us that because they did not support Hindus in 1946 for being lynched, that Hindus got up and tried to defend themselves, and Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru came and said stop, and Hindus said no, till we are not defended, we will not stop. Are Hindus being blamed for that? They said I want Shazia. Will not be allowed to kill. Shazia, Samir also raised this point. It's a fair enough point that has also been made by Amit. Shazia, I want a clear response from you on two aspects. Let's be honest. Shazia, so say I just want to make a small intervention. Shazia, just a small intervention, because I want a clarity on two things, because I know this is going to come up in the course of the debate again and again. So let's put this very straight on record. Now, as far as the government's campaigns are concerned, the Har Ghar Tiranga, what has essentially happened is that the argument that has been put forth is this, that why are you basically shoving it down our throat? That's what the opposition parties are saying. You've heard what Sabir of the Samajwadi Party had to say. I want you to respond to that, and then perhaps Sumansi Raman, you can come in. So firstly, I would like to say, objectively, as somebody who believes in facts, because somebody did mention facts earlier in the debate, whatever Amit Raina said just now is actually there in the history. These are the facts. They are there in every book. Your historian, my historian, all the historians, because those are events that happened in a certain order, which is called chronology, and in a linear fashion. So this is how it is. That is the timeline. So nobody can dispute them, and nobody can put a spin on them. So you can't dispute it. That's one. But constantly sugarcoating, taking away the role of whether it's Muslims, Islamists, I would say not Muslims, and there's a huge difference. I mean, I'm a Muslim, I'm an Indian, I'm a woman. I'm not an Islamist. So there's a difference there. And I think sugarcoating that role, putting the blame constantly on the Hindu brethren for everything, and just ignoring and being in denial, I think it does such a huge disservice to the very idea of so-called secularism that these sophist secularists seem to espouse. And it really shocks my integrity, just as a secularist slash, a seeker of truth and objectivity, seeker of facts, if you may, So I don't know. I mean, this is just lying constantly, you see, and just putting a spin. Now, Har Ghar Tiranga. What was the need to make it about Veer Savarkar and Islamists? What was the need to mention Veer Savarkar and therefore bring the argument to, and they lose it every time, you see. They're wrong every time. They're not even smart with facts.
So what was the need to bring it? The fact of the matter is that it took our Prime Minister so many years, 14th August 2021, to have a Remembrance Day. 6 lakh people killed in 7 days, 47 years back, talking about these times, can you imagine? And in a period preceding, 2 months before 15th of August, and about roughly 2.5, 3 months after the displacement, which has been the largest displacement of human beings, in the history. Not even the bloodiest revolution has seen that. So, and nobody wants to talk about it. You have a Holocaust museum is something people have done. South Africa has had a Truth and Reconciliation, but we want to sugarcoat. We want to just hide it. We just want to don't want to talk about it. Jairam Ramesh ji actually writes that you want to sugarcoat. Okay, should we open the wounds? Why would you do that? No, I'm not done. Another point. This is a small point. I think Har Ghar Tiranga is about Har Ghar Tiranga. Why would you want to oppose it? Why should it be shoved down your throat? Why would you see it as being shoved down your throat? Why would you embrace it happily? Har Ghar Tiranga. It's so beautiful. Why would you want to politicize it? It's you who's politicizing it, my friend. Why won't you embrace it joyously? What is the argument here? I don't get it. Hindu, Muslim, I don't know, Gujjar, Jat, Barelvi, Shia, Sunni, Deobandi. I'm not getting it, my friend. Islamist, Muslim, Hinduism versus Hindutva. Where is the spin here? Why should there be a spin on everything? I don't get it. हर चीज में spin लगाना है क्या? नट बोल्ट करते रहोगे ठीक? झंडा है यार, तिरंगा है, अपने देश का है. भारत हमारा देश है. If you are confused, you can ask many of your party colleagues. They will be able to explain it to you. प्रॉब्लम क्या है? Shazia समझ में नहीं आ रहा है. Shazia ji, प्रॉब्लम आ जाता है. What is the Suman Siraman, what exactly? What is the thing? What exactly? Suman Siraman, will you or will you not tell me something, Suman Siraman? Okay, one second. Shazia. Okay, let me take this forward. Shazia, your point is taken. Suman Siraman, the votaries of Suman Siraman. Okay, Shazia, just what? Suman Siraman, I'm sure you've travelled outside India. Let's just do it. Okay, Shazia, let's look at it this way. Absolutely. You're a knowledgeable man like Suman Siraman, and I can safely assume, Suman Siraman, a knowledgeable person like you, I can safely assume that you've also travelled across. You've seen countries like the United States of America, and if you actually go to any place in the United States of America, you would find in almost every household, outside their house, the US flag there. Pseudo-intellectualizing. In fact, a Congress leader, it is the Congress leader who had basically petitioned as far as the Tiranga is concerned. We were very queasy. We are always very queasy when it comes to our own national flag. You tell me, Suman Siraman, why should we Indians not be proud of our own national flag and look at politics behind it? Forget, for a moment, just forget that this was an initiative of the Bharatiya Janata Party. Who is speaking of not being proud of the national flag? Every Indian is proud of the national flag. I mean, there were certain organizations which were not proud of the national flag, which refused to accept the Tiranga as the national flag. Some of them up to almost till 2002. But I think every Indian is proud of the national flag. And I don't see any two opinions emerging on that. Now, I just have a couple of points to make. One is, if Shazia ji wants to know more about spin, all she has to do is to pick up the phone and talk to her party colleagues, because a lot of them are sort of masters at that. Again, the second point, let me finish my point. I didn't interrupt you. One minute. That's hardly an answer. There's one gentleman who spoke about Syed Khan in 1876 advocating two-nation theory. Now, I can give you dozens of nationalist Muslims who opposed the two-nation theory. Has he heard of a gentleman called Maulana Azad? Has he heard of a gentleman called Khan Abdul Ghaffar Khan, who was called the Frontier Gandhi? Does he know that the All India Muslim Azad Conference passed a resolution saying we will not accept two nations? They wanted a united India.
This is also fact, but I think that these facts are not convenient. So we will have to somehow figure out some way of rewriting all this also. Maybe I've given more inputs to help this gentleman to rewrite these things. They were not convenient to Mr. Nehru also, right? They were not convenient. Yeah, it's a fact. Sumanji, they were not convenient. You are right. The facts from Khan Abdul Khan, Ghaffar Khan's his what he presented and what his misgivings were not appreciated by. What about Maulana Azad? What about Maulana Azad? That is true, and that is also recorded. That is recorded. And in fact, Maulana Azad and what his opinion was, and you please read what he said about Mr. Nehru, and he says it was such a mistake. I wish we had chosen Sardar Patel ji, and I'll take that out and I'm going to tweet it right now. No, so we are talking of the two-nation theory. We are talking of the two-nation theory. And let's be very clear. Let's be very clear. Nehru does not need a certificate from anyone. But why do you need to put a spin? Whenever you suit, you choose one. No, Shravan, let me come in. He stands tall as the architect of modern India. Whether Sumansi Raman, let's not do this. This dog whistling is not going to work out. One second. Okay, you've made your point, Sumansi Raman. You've made your point. I'm going to run out of time, so I don't want this to continue like this. I don't want Sumansi Raman. You've made your point. One second, Shazia and Sumansi Raman, hold on please. It's a request. Hold on please. Sumansi Raman, come on, you can't hijack. Come on, you can't hijack. You made your points. You've made your points. Sumansi Raman, please hold on. Don't hijack it like this. It makes absolutely no sense. No one is going to understand what you're trying to say. Shazia, you made your point, Sumansi Raman. Shazia, quick response. I want then Tausif and General Kulkarni to also come in. I'm really running short of time, so Shazia, it's my request, keep it short. Only 30. So I would like to request. Go ahead, Shazia. Sumanji, please do not. If you think my colleagues are doing it, you don't have to be such a scapegoat, and you don't have to spin yourself. And if you can't quote selectively, because if you want to quote Maulana Azad, I can say a lot of things that Maulana Azad did say also about Jawaharlal Nehru. So you can't use something in one context and then feel embarrassed about other things. Let's not do that, please. Let her complete. No. The topic is Har Ghar Tiranga. Har Ghar Tiranga. Sumansi Raman, please. I'm sorry, please see what is being captured out whichever here. Goal. Mega politics over Madras Congress comment. Mr. Bhupesh Baghel's comment is the key. Sumansi Raman, I made this very clear. Sumansi Raman, I'm not letting this happen. Sumansi Raman, I'm not letting this happen. I'm not letting this happen on my show. Shazia and Sumansi Raman, I'm not letting this happen. Talking over each other is not something I'm going to let this happen. I just wanted 20 seconds. Sumansi Raman, you made your point. Shazia, another 10 seconds more, Shazia. You've taken enough. 10 seconds more. Make your statement. Make your statement. No, if you're going to give me 10 seconds, I do not want this gentleman who was speaking very politely to interrupt me constantly. Can you? Okay, I've already told Sumansi Raman. You make your point. Yeah, I'll make sure. Please go ahead. Make your point. Make your point. That is my time. So I want to say this, that is very convenient to get shifty and keep changing the goalposts and use a person's quote selectively to suit your purpose. The devil has been, does that as the proverb says. Now let's not go there because there are so many things to be said. Why put a spin? If it's Har Ghar Tiranga, it's very simple. What proverb? It's very simple. So why there has to be a spin about it? I can, all these years, I can intellectualize and talk about it and put a spin. One doesn't do it because it's so meaningless. Because it's no longer about Veer Savarkar or Justice Shahid. It is about today's India. It is about 15th August of 2022. It's about the idea. Okay. Tausif. Why let this party politics come Absolutely. in? It is something we are debating. The interesting part is Shazid, thank you. You made your point. Let me bring in Tausif. Tausif, on the eve of our independence, there is a lot more to talk about. And in fact, I can actually go on and on about
where we have succeeded. Yes, there is a long way to go. I'm not saying that we have achieved it. There are a lot of areas that our country really needs to work on. There are several challenges, and a big country like ours will always have those kind of challenges. But for once, Tausif, at least tonight, I'm running short of time. Tonight, why don't you actually, for once, not talk about the negatives, but also speak about the positives of this country, and perhaps also laud the fact when the government is correct in certain issues, why don't you laud the government for that? When they are going wrong, feel free to take them to the cleaners. But at least on a matter like this, where all of us should be proud, rather than giving a spin by saying that, look here, the government is shoving it down our throat. Pehle bola tha thali bajane ke liye, ab bol rahe ki tiranga lehrane ke liye. Now that kind of comment is trivializing this entire matter and perhaps also insulting the nation. I agree with you that as a nation we have come very far in last 75 years. We have come very far in last 75 years, and yes, you are right that we also have a long way to go. I agree with you that when you say that we must speak about positive work that is done, but I am compelled to, I'm absolutely compelled to at least talk about one incident, a recent incident, which breaks my heart. A 9-year-old school boy, when in 2022, 9-year-old school boy is categorized as Dalit and is punished by beating him to death. I'm not blaming anyone. I'm not blaming any particular party. I'm not blaming any particular state. I am talking about us as a whole, as a nation. When can we stop this? There is a law to stop atrocities against scheduled caste, scheduled tribe. There is a constitution which clearly abolishes the caste system. You have a point. Still, it makes us cry. I don't want to remind you. I don't. Tausif. Can we today pledge as a nation? Okay, Tausif. Okay. Tausif, I think so. You also remember. In fact, this is a story that we have been tracking very closely. It's shocking. It's shocking, and it's. Tausif, it's happened in a state. The incident has happened in a state where time and again we have been talking about the rising crime in that particular state, but not much has been done. But I want to give this last word to General Kulkarni, a man that I really admire. This is a mentality. General Kulkarni. It's a mentality, caste system mentality. It's not a crime. Okay. This has to be. I just want one last word. I want to end this. Tonight, all my panelists. One second. Hold on, Tausif, hold on. You've made your point. Tonight, slight departure from the way we generally end our debate. We're ending this debate on the eve of our independence, and what better than perhaps someone like General Kulkarni with a varied experience, who has actually seen the country, going through one of the most difficult times. Let's not forget some of the most difficult wars that we have fought. What were some of the most difficult wars that we have fought, and with limited resources? With limited resources, we have basically fought those wars. And today we are where we are. And General Kulkarni, one last word from you, perhaps on a very positive note, so that all our viewers who are watching this can at least take back something that they should be feeling proud of. Speak on casteism as well. Shravan, first and foremost, it's very important that Har Ghar Tiranga, it's his choice, it's his prerogative. Pride. It's instill pride in every individual to see for himself as to what India is about, to feel the pulse of India, and that is where, as what he's trying to talk about caste or anything like that, it is for us as Indians to introspect. It is not, the nation is proud, the nation is where we are. We comprise the nation. If we have not to be able to introspect, if we are criticizing each other, we are not on the same page when it comes to celebrating India's Independence Day, I think there is something wrong with some people. It is nothing wrong with the country. It is introspection by the people. They are not, that is why Har Ghar Tiranga, that is why the need to instill the pride in everybody that we are all good human beings. We are all part of this country. We have to take this country to places. And each one of us is capable. Each one of us has the desire. Each one of us wants to see the country at that great pedestal
Who's not proud of our country? We are. And that is why Har Ghar Tiranga is the way of instilling pride in every Indian. Let's do no wrong. Let's not criticize each other. Let's all work for this country. We are all born in this country. We must unitedly stand, and unitedly we must work for this country and not politicizing one bit. Every part of it will have two sides at the same coin. No problem. But when it comes to nation, when it comes to Tiranga, when it comes to the great, if there is something wrong, we need to introspect ourselves. If something is wrong with me, I don't blame the nation. I don't blame the government. I am responsible for the wrong that I do. And that is what is very important. We take pride on the eve of the 75th independence. Thank you. Har Ghar Tiranga with a view to instill pride in every Indian. I'm really running short of time. Okay, Tausif, I don't have the time for I don't have a time for the response right now. But General Kulkarni, thank you very much for putting this into perspective, and a thought that all of us will go back to bed tonight with. And I'll be requesting all our guests and all our viewers who are tuning in right now, the unmissable broadcast with our editor-in-chief, Arnab Goswami, starting from 6 o'clock tomorrow morning. Thank you very much, Azay Elbe, General Kulkarni, Amit Raina, Tausif Khan, Dr. Suman Siraman and Samir Singh. Looking forward to meeting all of you tomorrow on our special broadcast. Reading allows us to become familiar with ourselves. We don't read, we won't know what is knowledge. I just find it very interesting to know people's lives, how they went through certain situations, how they dealt with things. So wherever you want to go in life, if you read books along those lines, then that would really help you in growing. Reading could mean a million different things to every individual. What does it mean to you? Visit readindia.info to find out more. In an exclusive conversation with Republic, Jammu's ADG Mukesh Singh on terror threats ahead of Independence Day said that terrorist groups are in a bid of infiltration and to target security camps to avoid any act of terror in the Union territory. Anti-drones have been installed and the public have been briefed about the threats. Speaking about the recruitment rally for Indian Army Agniveers as per Agnipath scheme, Major General Ranjan Mahajan says in total 4 districts will be covered. Best candidates will be selected through transparent process. He further revealed about a separate women's rally which will be carried out after a few days. You're watching live and breaking other top stories from across the country after the sudden demise of India's big bull Rakesh Jhunjhunwala's final rites to be reportedly performed at 5:30 p.m. today in Mumbai's Malabar Hill. Jhunjhunwala was brought dead to Breach Candy Hospital at around 6:45 a.m. this morning. Following the demise of the ace investor of India, उन्होंने अध्यक्षता किया। उस समय उन्होंने कहा कि 2 राष्ट्र का उन्होंने स्वीकार किया और वहीं मोहम्मद जिन्ना ने 1937 में उसको स्वीकार किया। तो 2 राष्ट्र के जो सिद्धांत है उसको सावरकर ने प्रस्तावित किया और उसका समर्थन जिन्ना ने किया। तो विभाजनकारी तो ये लोग हैं। देश की आजादी में उनकी भूमिका क्या रही? The Amity BBA has been ranked India's #1 BBA in the recently released Times of India B School 2022 rankings, a testimony to Amity BBA's globally benchmarked standards in education. These kind of trainings are very important because this entire region is more of the mountainous rather than plains. So the Jawan coming to the Kargil battle school has to go all kind of training. हमारे सेना में लड़ाई लड़ने की इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास तथा दुश्मन को निष्क्रिय करने का ताकत है। You have to be physically fit if you have to be
in this kind of weather and in this kind of region. And now let's get you some news from across the country in brief. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has received death threats in a letter addressed to Devendra Tiwari, National President of the Bharatiya Kisan Manch. One Mohammad Ajmal said that the regime of Chief Minister Adityanath, people like Tiwari have been too indulgent in Gauraksha and Gaushalas and warned them to mend their ways or face dire repercussions. President Draupadi Murmu will deliver her maiden address to the nation on August 14th on the eve of Independence Day. The address by the President is a regular feature of Independence Day celebrations. On the eve of Independence Day, Republic from Siachen base. विभाजन के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है, इसलिए 14 अगस्त ये पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है और कल भारत का स्वतंत्रता दिवस है। तो हमारे देश के उस समय के नेताओं ने जल्दबाजी में किसी तरह से हमको कुछ मिल जाए, भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया। NCP leaders Anil Deshmukh and Nawab Malik and Shiv Sena leader Sanjay Raut, who have been arrested in money laundering cases by the Enforcement Directorate, are now lodged in Arthur Road Jail in 3 different barracks. However, Malik, who was arrested in February, is currently admitted into a hospital in Kurla for treatment. Shiv Sangram party leader Vinayak Mehta killed in road accident at Khopli tunnel in Maharashtra's Raigad. Maharashtra's Chief Minister Eknath Shinde speaks on his demise, stating he had contributed significantly towards the Maratha Andolan and was a good leader. A Dalit child allegedly beaten severely, causing his death over drinking water in Rajasthan's Jalore. He was allegedly beaten up for touching a water container at his school and was beaten by his teacher. The big bull of the Indian markets, Rakesh Jhunjhunwala, is no more. Born in the year 1960, Jhunjhunwala passed away at the age of 62. He was brought dead this morning to Mumbai's Breach Candy Hospital at 6:45 a.m. Heading companies, Hungama Media and Aptech, among others. The veteran stock market investor had recently inaugurated the low-budget airlines Akasha Air, often referred to as India's own Warren Buffett. He passed away at the age of 62 following health complications. In other news, a total of 12 bodies recovered so far. In August 11, both capsized incident near Banda in UP. Rescue operations continue following disaster. I mean, why they have to attack us? This is a historical fact that on this day, another country was born out of our own territory, from our motherland. A part of our motherland was taken away. In an exclusive conversation with Republic, Jammu's ADG Mukesh Singh on terror threats ahead of Independence Day said that terrorist groups are in a bid of infiltration and to target security camps to avoid any act of terror in the Union territory. Anti-drones have been installed and the public have been briefed about the threats. Speaking about the recruitment rally for Indian Army Agniveers, as per Agnipath scheme, Major General Ranjan Mahajan says in total 4 districts will be covered.
Best candidates will be selected through transparent process. He further revealed about a separate women's rally, which will be carried out after a few days. You're watching live and breaking other top stories from across the country after the sudden demise of India's big bull Rakesh Jhunjhunwala's final rites to be reportedly performed at 5:30 p.m. today in Mumbai's Malabar Hill. Jhunjhunwala was brought dead to Breach Candy Hospital at around 6:45 a.m. this morning. Following the demise of the ace investor of India's global history, Prime Minister Narendra Modi paid condolences to Rakesh Jhunjhunwala. शहीदों के बीच खड़ा होना आसान नहीं होता। जिसे हो इश्क हदीदी वही गर्दन कटाता है। दोस्तों, आज़ादी की 75वीं सालगिरह, आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये 75 साल के मायने क्या हैं, हमारी आज़ादी के मायने क्या हैं? इस वक्त मैं जोधपुर में हूँ। वीर भूमि कहा जाता है जोधपुर को। यहाँ पे कई शौर्य गाथाएं लिखी हैं। आज मैं मिलूंगा कुछ ऐसे लोगों से जो वही गाथा आज की तारीख में 21वीं शताब्दी में दोबारा लिख रहे हैं। कहते हैं राजस्थान की एक खासियत है, एक तरफ रेगिस्तान है और एक तरफ पाकिस्तान। तो कौन है जो सरहद की निगरानी करता है? वो कौन है जो चट्टान की तरह सामने खड़ा है हमारे और दुश्मन के बीच में? आइए मिलवाते हैं आपको कमांडेंट मिस्टर वायस राठौर। बहुत बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, ये कैमल विंग कमांडर है। मिस्टर कीची से हम मिल रहे हैं और यहाँ पे मिस्टर राठौर जो हैं वो कमांडेंट हैं एसटीसी के। अब ये हमें दिखाएंगे। देखिए, बड़ी खूबसूरत सी बात है दोस्तों, कैमल यूनिट्स जो हैं, कैमल यूनिट्स दुनिया में बहुत कम हैं। सुनने में आया है कि शायद इजिप्ट में हो, शायद मोरक्को में। भारत की सिर्फ एकमात्र कैमल यूनिट बीएसएफ के पास है। ये कैमल यूनिट कैसी है, इनकी दिनचर्या क्या है, इनकी ट्रेनिंग कैसी, और सबसे बड़ी चीज, इनकी आंखों से देखेंगे हम आजादी का अमृत महोत्सव। चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो रहते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। अच्छा, फौज में फुल ऑथराइजेशन में ये बहुत श्रीमान जय हिंद। कैमल परेड पर 5 एसओज, 45 सवार, टोटल 50, 62 बोट परेड पर उपस्थित है। ठीक है साहब। जय श्रीमान। जय हिंद। तो मिस्टर राठौर, ये यहाँ पे आपने कैमल्स रखे हैं और अब इस पर काठी पहनाई जाएगी? हाँ, अब ये मॉर्निंग का जो इनका रूटीन है वो शुरू हो चुका है जी। एरिया की साफ सफाई किया है। अच्छा अच्छा। कैमल को ग्रूम करते हैं, इनके साफ सफाई कर रहे हैं जी। और अब इनको तैयार करेंगे प्रैक्टिस के लिए। अच्छा। पहली रूटीन है इनका। हाँ। उसके हिसाब से ये हमारे सब इंस्पेक्टर राठौड़ है, ये आपको और बताएंगे डिटेल में। चलिए, तो फिर मैं इनसे जाके बात कर लेता हूँ। साहब कैसे हैं आप? अच्छा साहब, एक बात बताइए, ये जो आप कह रहे हैं कि कैमल जो है, कैमल अभी तैयार होंगे, तो सबसे पहले क्या ये ब्रश से इनकी साफ सफाई हो रही है? सबसे पहले कैमल के जो बैठने का इलाका खड़ा उसकी साफ सफाई करते हैं। हाँ। उसके बाद में काठी लगाने से पहले कैमल का साफ सफाई करते हैं, उसको हम कैमल भाषा में ग्रूमिंग बोलते हैं जी। तो उसकी पूरे पता भी लगता है, कहीं चोट भी नहीं और कोई देखने में और कोई कांटा कील तो नहीं है। उसके बाद इसके ऊपर हम काठी लगाते हैं। अगर कांटा कीलो चोट भी लग सकती है कैमल? हाँ, चोट लगती है, सुबह का तो पहन होगा तो सुबह बता नहीं पाएगा जी। इसलिए पहले हम पूरा इसका जी जी। अब ये है काठी लगाने का तरीका। हाँ, काठी लगाने से पहले इसके नीचे गद्दी लगाते हैं। हाँ, गद्दी लगाने, क्योंकि जैसे हम जब, मुझे याद है जब हम राइडिंग सीखते थे तो कंबल लगता सिर्फ एक घोड़े पे और फिर उसके ऊपर काठी लगती है। लेकिन ये क्या है कि क्योंकि इसमें हम पे ऐसा, तो आपको 2 गद्दे लगाने पड़ रहे हैं।
मैंने जितना भी देखा, मैंने देखा कि जो हैंडलर हैं बड़े प्यार से रखते हैं ऊँट को, बच्चे की तरह पाल के। बिल्कुल इसकी साफ सफाई भी हो रही है, इसका खाना भी हो रहा है, इसका इलाज भी हो रहा है। ये उठा ऊँट, अभी ऊँट दोस्तों ये तैयार हो गया है बिल्कुल, और ऊँट को अब पीटी के लिए ले जा रहे हैं, यानी कि फिजिकल ट्रेनिंग। हर सुबह ऊँट की वर्जिश होती है, बिला नागा हर सुबह ऊँट की वर्जिश होती है, और हैंडलर उसको ले जाएंगे। अब हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से पीटी करते हैं, क्योंकि ऊँट की भी फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए। फौजी ऊँट है, ऐसे थोड़ा तो छोड़ देंगे उसको, पीटी भी होगी, इसका खिलाएंगे पिलाएंगे भी, इसकी हेल्थ केयर भी पूरी ध्यान रखा जाएगा, मेडिकल का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। लेकिन अंत में जैसे कि बीएसएफ वालों ने मुझे बताया, ये सिर्फ राजपथ के चलने के लिए ऊँट नहीं है। जब बीएसएफ जंग में जाएगी तो ऊँट भी साथ में जाएगा। और हम बात करेंगे आगे और बताएंगे कि जंग के मैदान में, युद्ध के मैदान में इस ऊँट का क्या काम है। 21वीं शताब्दी, हम लोग बात करते हैं सैटेलाइट की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात हो रही है, लेटेस्ट वेपन्स एंड इक्विपमेंट भारत में राफेल आ रहा है, चिनूक आ रहा है, दुनिया भर की चीजें आ चुकी हैं और आ रही हैं। लेकिन फिर भी हम बात कर रहे हैं ऊँट की, जो 1000 साल पहले भी इस्तेमाल करा जाता था युद्ध में। आज की तारीख में ऊँट का आखिर काम क्या है, क्यों ऊँट इतना जरूरी है कि बीएसएफ कहती है नहीं हमें ऊँट चाहिए, क्योंकि कल अगर लड़ाई होगी यही ऊँट हमारे काम आएंगे। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखिए तो साहब, ये ऊँट के ऊपर आप लोग एमएमजी लगा रहे हो, ये मैंने पहली बार देखा अपने जीवन में। वैसे हाँ, नहीं हमको इसमें कारवा में जोड़ा है, तो इसको परेड में भी दिखाया। हाँ। और ये वैसे रेगिस्तान में ले जाने के लिए भी, कैरी करने के लिए ये शुरू से चल रहा है हमारे। दोस्तों ये ट्राइपॉड है एमएमजी का, ये ट्राइपॉड है। तो ये ट्राइपॉड तो इन्होंने फिक्स कर दिया, ये बनाया है कॉन्ट्रैप्शन, इसके ऊपर ट्राइपॉड डाल दिया, इसको बांध दिया। अब इसके ऊपर ये गन लगेगी, लगाइए इस तक, लगाइए, ये देखिए इसके ऊपर एमएमजी हो गई माउंट, हो गया साइड हो जाए तो हो गया तो अभी लग गई एमएमजी फिर। हाँ सर, अब ये तैयार है। तो दोस्तों ये यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे खुलता है, फिर इसको कॉक यहाँ पे करा जाता है। ये इसका ब्रीच ब्लॉक है, ये टॉप कवर ऊपर उठा, टॉप कवर ऊपर उठा, उसके बाद कार्रवाई शुरू इसकी। ये जो विजुअल है मेरे साथ रहेंगे जीवन भर, क्योंकि ऐसा मैंने जीवन में नहीं देखा। कई बार एमएमजी चलाई, कई बार एमएमजी की खोलजोड़ करी, कई बार एमएमजी को डिप्लॉय करा। लाइन ऑफ कंट्रोल में जब मैं था, वहाँ पे भी एमएमजी हमारा एक बहुत, जिसको कहते हैं कि एक कारगर हथियार हमारे साथ होता था। बड़ा भरोसा था हमें एमएमजी के ऊपर। लेकिन पहली बार ऊँट के ऊपर मैंने देखी एमएमजी, फर्स्ट टाइम। हमने आपने एमएमजी दिखा दिया हमें। हाँ जी। और ये मैं जैसे मैंने बोला, मैं पहली बार देखा, मैंने कभी देखा नहीं अपने जीवन में ऊँट के ऊपर जी एमएमजी। अब ये 51 है ना, ये 51 mm मोटर, ये 51 mm मोटर है, ये भी ऊँट के ऊपर माउंट कर रखी है, ये लगा रखी है 51 mm मोटर। हाँ। ये इस तरीके से पकड़ी जाती है, इसको निकाल के फिक्स हो गया ये मामला, नहीं निकल गया। पर हाँ तो फिर इसको लो या आई एंगल से हम फायर कर सकते हैं, इसको बाहर निकाल के। वैसे ये माउंट करने के लिए इसका एक माउंटेड बेस बना रखा है, इसके ऊपर हम माउंट कर देते हैं। हाँ, इसके ऊपर माउंटेड है, वैसे कि जैसे जमीन पे गए क्विकली ऐसे नील करके। हाँ, नीलिंग पोजीशन से, सिटिंग पोजीशन से, और इसमें एयरबस भी निकलता है, इसमें इसका फायर कर सकते हैं। किल राउंड भी निकलता है इल्यूमिनेशन का। हाँ, और बढ़िया हथियार है। यहाँ पे दोस्तों ये तो बिल्कुल अजूबा ही है, और ये कोई सोच भी नहीं सकता। ये पहली बार तो खैर वो भी मैंने पहली बार देखा, लेकिन ये दिस इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। ये देखिए, ये 81 mm मोटर है साहब। ये 81 mm आपने इसको ऊँट के ऊपर लगा रखी है? बिल्कुल साहब, ऊँट के ऊपर लगा रखी है, लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार है। अच्छा, तो इसके 3 है, ये बेस प्लेट है, ये ट्यूब है, और यहाँ पे ये इसका बाइपॉड लगा हुआ है यहाँ पे। तो 3 हिस्से होते हैं 81 mm मोटर के। तो ये तीनों के तीनों इसके ऊपर लगा रखे हैं। बड़ा भारी होता है, ऊँट तो उठा लेगा आराम से, पर इसके लिए तो पूरी एक टीम होती है जो मोटर
का पूरा उठाती है, इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे हथियार को। अब इसके बारे में जरा कुछ बताइए। ये 81 मोटर है जो कि हमने ऊँट पर लगा रखी है। इस ऊँट का नाम राफेल है, जो कि लड़ाई के हिसाब से नाम रखा। इसका राफेल नाम है इसका? जो OM राफेल है उसी प्रकार हमारा रेगिस्तान का ये राफेल है। रेगिस्तान का राफेल है, जबरदस्त। दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से ऊँटों की साफ सफाई हुई और किस तरीके से ऊँटों को उनके ऊपर काठी लगाई गई और उनको तैयार करा गया। अब ये ऊँट जो हैं ये मॉर्निंग फिजिकल ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। सुबह का वक्त है, अच्छी खासी धूप निकली हुई है और अब इनकी ट्रेनिंग शुरू होगी और यहाँ पे कुछ समय तक इनको एक्सरसाइज करवाई जाएगी, इनकी वर्जिश करवाई जाएगी कि ताकि इनकी फिजिकल फिटनेस चरम सीमा पे रहे हर वक्त। दोस्तों, कहते हैं कि ट्रेनिंग के बिना फौजी नहीं और ट्रेनिंग के बिना फौजी का जीवन मुकम्मल नहीं। आज ये पूरे सीमा सुरक्षा बल के जो कैमल हैंडलर्स हैं अपने कैमल समेत यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड में इकट्ठा हुए अपनी ट्रेनिंग करने के लिए, और ये असली में आज़ादी के मतवाले हैं, ये असली में आज़ादी के दीवाने हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग पा के ये जाएंगे बॉर्डर, जहाँ पे एक तरफ रेगिस्तान है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, और ये दिफा करेंगे, ये हिफाजत करेंगे हमारे मुल्क की। ये हैं भारत की आज़ादी के मतवाले। देखिए, ये जो आप अभी देख रहे हैं ये मॉर्निंग का सेशन है और डेली हमारा रूटीन ये होता है कि सुबह कैमल्स को, कैमल हैंडलर्स को किस तरह से यहाँ ट्रेन करें विद एन अल्टीमेट एम। जो अल्टीमेट एम ये है कि ये जाके बॉर्डर के ऊपर में अपनी ड्यूटी करें। बॉर्डर आपको पता है कि यहाँ राजस्थान में रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में सबसे इफेक्टिव जानवर जो है वो कैमल है। तो कैमल को किस तरह से ट्रेन किया जाए कि पीस टाइम पे वहाँ पर अच्छी तरह से पेट्रोलिंग कर सकें, पूरे एरिया की देखभाल कर सकें, और वॉर टाइम के अंदर जो इसकी यूटिलिटी है, जो इसकी उपयोगिता है, उसको अपना सार्थक कर सकें। इसीलिए इनको रिग्रेस ट्रेनिंग दी जाती है, डेली ट्रेनिंग दी जाती है। ये तो मैंने आपको ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। इसके अलावा अगर हम सेरेमोनियल की बात करें तो सेरेमोनियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जहाँ आप लोग राजपथ पे देखते हैं हर साल 26 जनवरी को ये लोग चलते हैं। इसके अलावा कई सारे फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस में ये चलते हैं, तो उसकी ट्रेनिंग यही होती है। यहाँ से ट्रेन होने के बाद ही ये लोग जाते हैं और कहीं पर भी इनकी जहाँ पर भी भेजते हैं ज़रूरत पड़ती है। और आपको पता होगा वर्ल्ड वाइड इन्होंने नाम कमाया, हर जगह इनके परफॉर्मेंस की बहुत प्रशंसा हुई है। और ख़ास करके आज जब आप आज़ादी का अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं तो इन्होंने बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया है, हर एक प्रोग्राम में भाग लिया है और आगे भी ये लोग इस प्रोग्राम में ऐसे प्रोग्राम में भाग लेते रहेंगे। तो ये जो आप ट्रेनिंग शेड्यूल देख रहे हैं, इन सब की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ के इनकी जो कमांडर है कैमल कंटिजेंट के मिस्टर MS खिची है। ये आपको अभी बताएंगे कि डेली रूटीन में ये क्या करवाते हैं ताकि कैमल और कैमल हैंडलर दोनों न सिर्फ फिट रहें बल्कि ट्रेंड हो जाए। आप इनको बताएं किस तरह से आप ट्रेनिंग कराते हैं। तो जैसा कि सर्वप्रथम सुबह के टाइम में इनको PT कराते हैं, तो सबसे पहले कैमल और कैमल हैंडलर पैदल कैमल को लेकर चलते हैं, जिससे कि क्या कैमल हैंडलर और कैमल दोनों वार्म अप हो जाए। उसके बाद में उनके ऊपर कैमल के ऊपर बैठ के राइडिंग करके 2 चक्कर निकालते हैं। उससे बाद में जो कि हमारे जो ट्रेनिंग का पार्ट है कि ड्यूटी के दौरान जिससे ऊँट को कैसे तैयार करना है, क्या ड्यूटियाँ लेनी हैं, उसकी वो ऊँट को ट्रेनिंग देते हैं। उसी के साथ समानांतर जो कैमल हैंडलर है उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है, क्या कैमल को कैसे हैंडल करना है और कैमल के साथ में कैसे बॉर्डर की ड्यूटी करनी है। और ड्यूटियाँ सर्वप्रथम पहले कैमल हमारे ड्यूटी के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा जैसे यहाँ पर RD परेड को उन्हें पार्टिसिपेट करने के लिए उनको परेड के लिए तैयार किया जाता है, BSF रेजिंग डे के लिए तैयार किया जाता है। आज़ादी की 75वीं सालगिरह, आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसका क्या मतलब है, क्या मायने हैं आज़ादी के, ये समझने के लिए और एक फौजी की नज़रों से ये समझने के लिए कि उसके लिए आज़ादी का क्या मतलब है, हम यहाँ पे आए हैं जोधपुर। दोस्तों, ये भारत की एकमात्र कैमल यूनिट है। ये कैमल यूनिट वही यूनिट है जो आपको राजपथ पे भी दिखती है, लेकिन ये वही यूनिट है
जब बीएसएफ जंग पे जाएगी, जब बीएसएफ युद्ध पे उतरेगी, तो यही ऊंट बीएसएफ के सीमा प्रहरियों के साथ बॉर्डर पे जाएंगे, रेकी के लिए, पेट्रोल के लिए और कभी-कभी ऑफेंसिव एक्शन के लिए। शहीदों के बीच खड़ा होना आसान नहीं होता। जिसे हो इश्क हदीदी वही गर्दन कटाता है। ये एक फौलाद की दीवार है जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने बना रखी है और हर एक जवान के हाथ में एक तिरंगा। आज हमारे लिए बहुत शान और फख्र की बात है कि हम तिरंगे के साथ साथ चल रहे हैं। ये है आजादी का अमृत महोत्सव। ये है 75वीं सालगिरह भारत के आजादी की। दोस्तों, आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वीं सालगिरह हमारी आज़ादी की। आपने भी डीपी लगाई होगी अपने मोबाइल फ़ोन पे, आपने भी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे स्क्रीन सेवर लगाया होगा, लेकिन आज मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये इमेज, ये फोटो आसमान से कैसे दिखती है। देखिए, सर्वप्रथम मेरी तरफ से संपूर्ण भारतवासियों को मेरी तरफ से और बीएसएफ की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। निश्चित रूप से हमने आज़ादी जो है 75 वर्ष पूर्व ले ली थी, लेकिन इस आज़ादी को लगातार बनाए रखने के लिए हमको लगातार प्रयासरत रहना पड़ेगा और उसी प्रयास का एक हिस्सा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है जो हमेशा बॉर्डर पे 24 घंटे तैनात है। जहाँ तक बॉर्डर का सवाल है, मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि जब तक बीएसएफ है उस तरफ से आपको किसी तरह की सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। And now let's get you some news from across the country in brief. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has received death threats in a letter addressed to Devendra Tiwari, National President of the Bharatiya Kisan Manch. One Mohammad Ajmal said that the regime of Chief Minister Adityanath, people like Tiwari, have been too indulgent in Gauraksha and Gaushalas and warned them to mend their ways or face dire repercussions. President Draupadi Murmu will deliver her maiden address to the nation on August 14th on the eve of Independence Day. The address by the President is a regular feature of Independence Day celebrations. On the eve of Independence Day, Republic from Siachen base camp. Bigger challenge for the Indian Army, the soldiers, is not only fighting with the enemy but also in adverse weather. चैलेंज की बात है तो चैलेंज इंडियन आर्मी के लिए कोई चैलेंज नहीं होता। इतने -डिग्री तापमान में सर्वाइव करने के लिए हमें स्पेशल इक्विपमेंट और क्लोथिंग इशू किए जाते हैं। पर जाने से पहले हमारे को स्पेशल ट्रेनिंग, स्पेशल इक्विपमेंट्स दिए गए। China, Pakistan cannot enter into Siachen because the Satwara Ridge is being controlled by the Indian Army here.